Hello. So this is the first class of men's enrichment. Okay. तो एथर आम कौन कवर करिया जाऊे दैट SDG goals we all used to use SDG as introduction ने यूज करूचे नॉल कंक्लूजन ने यूज करूचे. ओके. सो से आम केमिति ताको इम्प्रूव करि परिबा एंड आउ गोटे जिनस देखिबा दैट फ्रॉम 2022 पैटर्न चेंज है OPSC रो. ओके. सो सेबेठू नहीं कि आज भितर ऑल टुगेदर देखापी गले 86 टा आम पाखे एमती PYQs अच्छी जो थे कि आम SDG को लिंक करई परिबा. ओके. SDG टोटल केतेटा गोल अच्छी 17 गोल्स. तो से 17 गोल्स को मु थ्रू आउट दिस मेन्स एनरिचमेंट रे 17टा गोल को आम डिवाइड करिछु विथ 5 पार्ट्स. कौन 5 पार्ट्स रहिला that people, planet, prosperity, peace and partnership. ओके. तो यही 5टा पार्ट रे हम एटा को डिवाइड करूचे एंड सेटा केमिति हमरो जीएस सिलेबस सहित लिंक्ड है कि अच्छी को पार्ट मीन्स जीएस सिलेबस मीन्स OPSC रो मेन सिलेबस रे को पार्ट रे से सब तक जिनस गुड़ाक अच्छी. आई जस्ट वांट टू शो यू that the detail पढ़ा सब तो जिनस. सपोज द फर्स्ट वन इज SDG 1 नो पॉवर्टी. ओके. सो नो पॉवर्टी भितर नेशनल सेगमेंट रे कौन कौन स्कीम्स अच्छी से कौन अचीवमेंट्स अच्छी बजेट आलोकेशंस कौन अच्छी एंड टारगेट्स कौन अच्छी. ओके. बिकज कहीं सब तो जिनस गुड़ा को मेंशन करुच्ची यहाँ है नेशनल सेगमेंट रो. देन सेकेंड तापर आसो कौन दैट ओडिशा पर्सपेक्टिव रे. ओडिशा पर्सपेक्टिव रे ओडिशा गवर्नमेंट रो कौन कौन इनिशिएटिव्स अच्छी एंड ता रिलेटेड रो एग्जांपल्स कौन कौन अच्छे ऑल दोज थिंग्स. तो यही सब तक जिन को ये देखो आउ गोटे जिन हूँ दिस ए इज द अचीवमेंट. ओके. बी इज द बजेट आलोकेशन एंड आउ बहुत जगह देखो टी लिखाई टी दैट मीन्स टारगेट. व्हाट इट. सो यू कैन यूज ऑल दिस सेगमेंट्स जी भी स्कीम्स है स्कीम्स रिलेटेड अचीवमेंट की बजेट आलोकेशन है यू कैन यूज ऑल दिस थिंग्स जितेबाला सिलेबस रे GS 2, 3 and 1 इनफैक्ट GS 4 रे भी आसो. तो से कौन ना GS 2 रे जमती कौन होची दैट सोशल जस्टिस पार्ट रे पॉवर्टी वाला सेगमेंट रे यूज करि परिबो हंगर वाला सेगमेंट रे यूज करि परिबो SDGs एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ने यूज करि परिबो. तो एटी जमती GS 3 रे इंक्लूसिव ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट बजेटिंग रे भी तुम यूज करि परिबो. सो ऑल टुगेदर जदि मु कहबी गोटे जिनस दैट थ्रू आउट द क्लास मुझा को 4टा 5टा क्लास रे मुझा को कंप्लीट करी माने गोटे गोटे सेगमेंट जोटा पीपल जमती है प्रॉस्पेरिटी जमती है प्लानेट है गोटे गोटे सेगमेंट रे कंप्लीट करी एंड सम वैल्यू एडिशंस एटी केवल एतिकी नुह व्हेनेवर वी आर रीडिंग अबाउट ऑल दिस स्कीम्स कि मिशन शक्ति विषय पढ़ले कि अंतर्जातीय गृह योजना विषय पढ़ले व्हाट आर द की इनिशिएटिव से कौन नियाई एंड की पैरामीटर्स कौन कौन अच्छी से जिन गुड़ाक भी मुझे तुमको कहबी एंड मीन व्हाइल क्लास गुड़ाक भी कवर करी से डाकिदेवी तुम लिखिद बिकज टू मच ऑफ स्टैट बेस्ड डाटा इज ओवर देयर एंड कौन कौन है से आइडियाज अच्छी कौन कौ हिसाब से करार अच्छी एंड हाउ कैन यू रिप्रेजेंट इट इन योर पेपर. ओके. देख जिते SDG रिलेटेड क्वेश्चन आसूची तो सॉरी SDG रिलेटेड क्वेश्चन आसूची 99% ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइटिंग अबाउट मिशन शक्ति समस्त लिखुचनी एंड तुम जब लिखुच मिशन शक्ति देन आफ्टर यू आर थिंकिंग दैट आई हैव पुट इन सम एक्स्ट्रा वैल्यू ओवर देयर बट एज एन इवैल्यूएटर हिसाब से निजक देखिक देख तुम ए क्लास ऑलमोस्ट ऑल 15 ରୁ 16 जन पिला अच्छ 16 जन पिलांकर कॉपी मो पाखक आसला जदि 16 जन पिला भितर मु 12 जन पिला पाखे देखी कि दैट मिशन शक्ति विषय समस्त लिखिच बोल तो मो लगी तो मोनोटोनस हो गला ना मुझे एडिशनल कहीं तुम गोटे मार्क एक्स्ट्रा देवाई जी तो कौन से जगह आम चेंजेस आनी पार. ओके. सो विल स्टार्ट विथ द SDG फास्ट रू के बेसिक इन्फो जो गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक मु कवर कराऊँगी देन लैटर ऑन. हाँ ये देख दैट इन द अचीवमेंट वाला पार्ट रे ए रहा बी रहा बजेट आलोकेशन टी रहा टारगेट्स रे. सो we know about 17 goals समस्त जानी थी वो I just don't want to put the focus on this one. So the recent stat कौन कहूची that India's rank 94 this year. Okay, it's a quick remembering fact. अब जो गुड़ा को आपको इच्छा अच्छी लिखा लगी ये आप लिखिदे पारे दैट कौन कौन से रही दैट 94 रैंक among 167 countries. Overall score out of 100 ru India स्कोर दिस टाइम
68.3. ओके इंडिया इम्प्रूव 2025 रे थिला 99 बट एबे हो 94 पांचटा पोजिशन ऊपर को आसी. ओके गोटा क्विकली तुम मानक कंप्लीट कर बिकज हमको स्कीम्स रिलेटेड अधिक टाइम जीव. देन 2015 रु आज पर्यंत भितर 2015 रे जो स्टार्ट है मैंने जो आम एसडीजी भितर आसिले तो से मोमेंट रे इट वाज 112 एंड एबे अच्छी 94 18 प्लेस रो इम्प्रूवमेंट होती फ्रॉम 2015 रु. देन तापर एसडीजी रे करेंटली फिनलैंड एट द टॉप, स्वीडन एट द सेकंड, डेनमार्क एज द थर्ड. ओके सो दीज आर बेसिकली द प्रिलिम्स रिलेटेड थिंग्स. तो यहाँ आमको बेसी फोकस करिवार नहीं. ओके तो मेजर चैलेंजेस कौ जगह रोचे दैट जीरो हंगर टाको अचीव करवा इंडिया लगे सब बड़ क्रिटिकल चैलेंज अच्छे. ओके तो से जीरो हंगर टाको इवन एसडीजी 2 रे आसूची जीरो हंगर. तो सेटा को आम डिटेल देखिए तार रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन स्कीम अच्छी, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा कौन कौन स्कीम्स अच्छी एंड तार इम्प्लीमेंटेशन कौन होती, बजेट एलोकेशन कौन होती. ओके सो तो केमिति आम एसडीजी टाको यूज करिपरिबा दैट डिकोड द डिमांड टाको जो क्वेश्चन डिमांड टाको एसडीजी सहित आम लिंक करई परिबा. तो एथरे ओडिशार स्पेशलिटी कौन एसडीजी को लेकिन अच्छी से जिन भी मुझे मेंशन करिछि. देन लिंक विथ ओपीएससी सिलेबस डायरेक्ट. सो आज आम कवर करबा पीपुल वाला पार्टा. ओके सो दिस 5 थिंग्स एसडीजी नो पॉवर्टी, एसडीजी 1 नो पॉवर्टी, एसडीजी 2 जीरो हंगर, एसडीजी 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन, एसडीजी 5 जेंडर इक्वालिटी. ओके सो गोटे गोटे कर सब तक करवा मु ट्राए करी ईच सेगमेंट को 20 मिनिट्स भीतर कंप्लीट करवा लगे. ओके सो starting with no poverty. So what's the goal seeks to achieve? Goal lo कौन अच्छे that end income and multidimensional poverty by ensuring. तो एठी कौन कहला फर्स्ट की टर्म एंड इनकम एंड मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी को आमको बोलला एंड करिवार अछि. ओके इनकम और मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी थ्रो कहा थ्रो रे ensuring employment, food and housing, social security, financial inclusion and resilience against economic and climatic shocks. Okay, there are broadly देखा पाएंगे 1 2 3 4 5 parts. Okay, जो स्कीम टाको ये डिफाइन होती ऑल दिस स्कीम्स ये सबुतक आस्पेक्ट्स को कवर करी गोटे गोटे स्कीम्स एग्जांपल्स दिखाई. गॉट द थिंग्स. सो फास्ट स्टार्टिंग विथ एबे कौन हो जाए नरेगाटा कौन हो जाए भिविजी राम. तो तादरे आउ गोटे जिनस मत कह भिविजी राम भितर कौन चेंजेस आस नरेगा और भिविजी राम भितर कौन चेंजेस आस भलसे भाव कौन कौन चेंजेस तादरे अच्छे. भिविजी राम रो फुल फॉर्म टा फर्स्ट कहलो. गारंटी फॉर रूरल रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण. ओके सो तो से कौन चेंजेस आसछि दैट्स द थिंग. ओके देन आउ कौन चेंजेस आसछि नंबर ऑफ वर्किंग डेज केते थिला केते हला 125 हला एंड वेजेस रे किछि चेंजेस आसछि डिमांड ड्रिवेन हो जाइए सेटा तमन तारा प्रीवियसली कौन थिला माने दैट प्रीवियसली डिमांड ड्रिवेन अप्रोच रहला थिला. तुम देखिथिबो गोटे जिनस एसडीजी को सबुठ अधिका कौ स्टेट बेसी सॉरी एसडीजी कहूँ मनरेगा जो थिला तो से कौटा सबुठ अधिका कौ स्टेट सबुठ अधिका अवेल करथला तार अमाउंट्स को. को स्टेट जो डिमांड ड्रिवेन थिला यूपी एमपी ता आगुला राजस्थान. व्हाट द थिंग्स एक्चुअली दे आर डूइंग मेसीन थ्रो रे काम करई दियंती एंड ताकू नरेगा थ्रो रे करके दैट्स ए पार्ट ऑफ दैट माने कोन रेड टेपिज्म रो गोटे चेन थिला सेटा तांकर. ओके सो तो कौन कौन चेंजेस आसला फास्ट देखि दियो. प्रोवाइड डिमांड बेस्ड रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएट्स प्रोडक्टिव एसेट्स. व्हाई इट इज रिलेटेड टू नो पॉवर्टी बिकज नो पॉवर्टी रो जो माने कौन अचीवमेंट रो गोल्स रो अचीवमेंट अच्छी जोटा एसडीजी प्रोवाइड करछि एन्श्योरिंग एम्प्लॉयमेंट. दिस इज द पार्ट व्हिच इज एन्श्योरिंग एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट आसला. ओके
सो गोटे जिनस मेंशन करो दैट कौन कौन प्रीवियसली थिला कौन चेंजेस होइछि कॉलम कर दियो लाइक दिस गोटे पट साइड रे एटा रहिला दुईटा सेपरेट कॉलम कर दियो कहूँ दैट गारंटी ऑफ वर्क डेज प्रीवियसली 100 डेज थिला रूरल हाउस होल्ड लगी that has been changed to 125 days. There is a term called minimum floor wage. Okay, जो wage टा तांको provide करा जाए workers को that is called as minimum floor wage. Previously floor wage टा per day basis रे यदि मु देखिबी it was about 241 rupees per day, which has been changed to 300 rupees per day. Previously thila completely central government ro funding re. Now it has become centrally sponsored scheme 60/40. And the funding model, next parameter is funding model. So funding model previously thila demand driven, and से जो demand driven टा मैं कहूँ demand driven actually कौन that demand by the gram panchayats. Okay, so that has been changed to normative allocation on the basis of socio-economic parameters. Normative allocations based on socio-economic parameters. Okay, बुझेला? So this is targeting ensuring employment session gala. Okay, then PMGKAY and तापर National Food Security Act NFSA. PMGKAY कौन फुल फॉर्म कौन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. तो एथर कौन रहा हाँ आ गोटे जिनस इन द पार्ट ऑफ दैट वन. सो these are the achievements जोटा कि गवर्नमेंट थिला दैट 2024-25 रे जनरेटेड एतिकी टंका पर पर्सन दिया हेतला एंड एटार रिसेंट रे कौन अच्छी सेटा को टिके तुम निजे देखीदेव. ओके कौन केते बजेट आलोकेशंस रे केते जाऊँगी. देन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सो प्रिवेंट्स इनकम शॉक्स फ्रॉम बिकमिंग हंगर एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये कौन रहा दिस इज कमिंग अंडर फूड वाला पार्ट. ओके दिस इज SDG 1 और नो पॉवर्टी गोल्स रे फूड को ये साटिस्फाई करुचे स्कीमटा फॉर द फूड पर्पस रे. एंड आर अचीवमेंट होची कौन फ्री फूड गेन कवर्स अबाउट 81.35 CR बेनिफिशियरीज. ओके सो से कौन कौन जिनस अच्छी यहाँ 2020 रे लॉन्च होता 2020 रे इटा लॉन्च होता एंड इट हैज बीन कवर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. केबे होता नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. ओके तो दिस इज कमिंग अंडर दैट वन. देन तापर आसला कौन आमर आवास हाउसिंग. जान लो एंड व्हाट्स द अचीवमेंट by March 2026 around 4.1 CR house has been allocated एतिकी amount sanctioned and एतिकी completed है सारी. ओके सो जिते एग्जाम रे रिलेटेड टू पॉवर्टी रो आसूची पॉवर्टी रो आम डायमेंशन्स रे एन्श्योरिंग एम्प्लॉयमेंट फूड वे फॉरवर्ड वाला डायमेंशन्स रे आम यही सब तो जिनस को पुट करें एंड साइमल्टेनियसली वी कैन रिलेट इट विथ द SDG 1. तो सही जगह आम एज एन एग्जाम्पल्स हिसाब से भी देपर ये सब तो जिन गुड़ाक.
ओके तो ताकू छाड़ सारा पर आउ केतेटा जिनस मु तुमको कहूँ दैट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तो एथरे केतेटा की जिनस अच्छे ओके तो कौन कौन की फीचर्स अच्छी जस्ट मु कहूँ दैट लेख समझते 1.2 लाख फॉर प्लेन रीजन जदि है गरीब कल्याण सॉरी आवास योजना रे आमे केमिति हल्ला फंड एलोकेशन होचे 1.2 लाख फॉर प्लेन रीजन रे जदि घर करूचंती ता लगी 1.3 लाख फॉर हिली रीजन्स okay then dbt mode Aadhaar link dbt mode that's the key feature of that one also the beneficiaries of pradhan mantri awas yojana gramin ro they can also avail additional funds through swachh bharat mission for the construction of toilets in their home good swachh bharat mission bala point they can also avail additional funds for toilet constructions under swachh bharat mission got the things 1.2 lakh को छाड़ी सारा पर स्वच्छ भारत मिशन अंडर रे they will get the funds to make the toilets over there in their home okay then this was about pradhan mantri awas yojana tell me about this one national rural livelihoods targeted goals रो कोटा को एटा को फुलफिल कला both सोशल सिक्यूरीटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन ओके तो से जगह आम पुट करवा दीनदयाल उपाध्याय वाला जिनसटा सो व्हाट आर द की थिंग्स ओवर देयर मु पीडीएफ टा तुमको सर्कुलेट करदेवी ओके व्हाट एवर द वैल्यूज जहाँ किसी भी से मेंशन होगी अच्छी सेटा को तुम पढ़ीदेव द वैल्यू एडिशन थिंग्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द मेजर अचीवमेंट थ्रू दीनदयाल उपाध्याय वाला रे सॉरी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ओके तो से की फीचर हो कौन द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट लक्षपति दीदी इनिशिएटिव एंड व्हाई लक्षपति दीदी इनिशिएटिव्स कौन कौन से कवर करुच्ची टू गोटे डेफिनेशन नो गोटे डायरेक्शन दूसरी से मेंशन करो टू स्केल वुमेन लेड रूरल एंटरप्राइजेस so that members can earn rupees 1 lakh annually. Got it? Then what about this one? नितेश स्ट्रीट वेंडर तो से कौन कौन जिनस अच्छी को फास्ट मत गोटे जिनस कह दैट लॉन्च केबे होइतला एंड केबे पर्यंत एटा एक्टिव अच्छी को मिनिस्ट्री अंडर रे आसुची भल से भाव
हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रो अंडर रे आसुछ गॉट इट सो एटा कहउतले कि सोशल सिक्योरिटी वाला पार्ट दिस वाज फाइनेंशियल इनक्लूजन सो मत गोटे जिनस तुम कह दैट जो मोटा सिलेबस सहित लिंक कराऊे अबाउट पॉवर्टी अंडर इनक्लूसिव ग्रोथ से जगह कौ स्कीम टाक तुम मेंशन कर एंड टेक इट एज ए टास्क कहीं ऑल टुगेदर जहाँ किसी भी अच्छे सब तो कहला डायमेंशन्स गुड़ाक आम एज एन एग्जांपल हिसाब से युवा पुट कर एंड इफ यू आर राइटिंग अबाउट द बजेट एलोकेशन और द अचीवमेंट इन दैट सेगमेंट इट्स डेफिनेटली गोइंग टू एड द वैल्यूज टू योर आंसर ओके मोर प्रिसाइज्ड आंसर विथ प्रॉपर डायमेंशन ओके कहीं मुझे स्कीम गुड़ाक कराऊँ दैट्स द रीजन कि सही रेडीमेड तुम माने धर बीबीजी राम कथा गला कि बीबीजी रामजी कथा गला कि रेस्ट धर माने कौन से मिशन शक्ति हो गला ये स्कीम्स टू बाहर किसी अलग स्कीम विषय लेख एंड तार रिलेटेड अचीवमेंट को भी तुम एज एन एग्जांपल हिसाब से तुम से मेंशन कर ओके एंड ताकू केमी तुम एसडीजी सहित लिंक कर देन GS1 ने प्रॉपर्टी माइग्रेशन सोशल एम्पावरमेंट ये सब तो जगह से स्कीम गुड़ाक तुम मेंशन कर गॉट इट देन तापर आसला ओडिशा सेगमेंट द फेमस मिशन शक्ति आपन तो सर अच्छा कहते मिशन शक्ति कौन ओके आउ कौन हाउ SDG कहूँ SDGs are actually helping the Odisha government to create employment केमिति रूरल लेवल स्किल डेवलपमेंट तापरे आउ these are the micro finance institutions सुबह कौन ओके ठीक अच्छे ताधे मत गोटे जिन कहतु दैट इंटरेस्ट फ्री लोन से किसी अच्छे किसी एग्जैक्ट नंबर सरिका ता रिलेटेड मन अच्छे कि केते टका पर्यंत लोन नहीं पारे कोलेटरल फ्री लोन्स से गुड़ाक ही दरकार से गुड़ाक टिके ब्रेनस्टॉर्म करंत ओके लेटर से गुड़ाक कवर करेबे सो द व्हाट्स द बेसिक एजेंडा converts women's collective into institutions of saving credit and enterprise and local governance achievement होची ओडिसा कोन एटा को समस्त नॉर्मली सब पिला लिखुछन दैट कोन 6 लाख वुमेन SHGs नियरली अबाउट 70 लाख मेंबर्स ओके सो एथरा आउ किस्टा मु वैल्यू एडिशन करूची दिस इज कमिंग अंडर दैट एम्प्लॉयमेंट वाला सेशन ऑफ माने कोन SDG 1 रो ओके एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन तो सेथरा मु कहूची केतटा जिंस लिखो SHGs can access collateral free loans up to 10 lakh at 0% effective interest. और that's up to सेटा केमिति प्रोवाइड करा जाए लिख लो SHGs can access collateral free loans up to rupees 10 lakh at 0% effective interest. Provided they maintain a clean, timely repayment track. Got it? Solla. Then तापरे आसला दिस वाज अबाउट एम्प्लॉयमेंट प्लस फाइनेंशियल इंक्लूजन देन अंतर्दय गृह योजना कहीं अच्छे ऊपर गोटे पढ़ले आवास
आवास वाला पढ़ले हाउसिंग वालाटा तो जो मैंने सेठरू कटि गले से अंतर्दय गृह योजना थ्रू रे प्रोवाइड करा जिवो एंड 2026-27 रे अप्रोक्सीमेटली 2000 कोटी टका प्रोवाइड कराई से स्कीम्स अंडर रे ओके तो आउ गोटे जिनस से इफ विल इम्प्लीमेंटेशन स्टेज को जब मुझे देखी इम्प्लीमेंटेशन रे कौन ना फास्ट जो मैंने एक्सक्लूडेड हो गले से प्रोवाइड करा द थिंग इज दैट इट्स ए 3 फेज इंस्टॉलमेंट तीनटा इंस्टॉलमेंट से पैसाटा प्रोवाइड करा जाए राइट डाउन एटा तुम एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तुम लिखिपर तीनटा फेज रे ही करा जाए टोटल अमाउंट इज 1,35,000 आई थिंक तो फास्ट फेज रे 40,000 दिया जाए लिखो फास्ट इंस्टॉलमेंट 40,000 एंड एटा टाइमली विजिट करके ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन डन जी है से हिसाब रे प्रोवाइड करा जाए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹40,000 सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज ₹65,000 and the third installment is 15,000 got it जदि फास्ट इंस्टॉलमेंट रे ऑन द बेसिस से लगी तो गवर्नमेंट सर आपन तो बेटर जानी थे दैट दे आर नाउ यूजिंग जीपीएस कैमेरास जीपीएस ट्रैकिंग पर्टिकुलर लैट लॉन्ग देखे कि कौन कंस्ट्रक्शन से इनफैक्ट जो मैंने इंस्पेक्शन में जाऊँच सेठी से मैंने एक्चुअली रे जाइछन्ति कि नहीं फॉर दैट रीजन दे आर यूजिंग दिस जीपीएस कैम टेक्नोलॉजी लैट लॉन्ग बेसिस एक्चुअली रियलिटी अच्छी कि नहीं से जगह ऑन द बेसिस ऑफ दैट जदि हेइथिबो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड कराला देन सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड कराबो देन थर्ड इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड कराबो ओके और एल्स टोटल केते हला 65 प्लस 1.2 लाख तो 1.2 लाख एट ए टाइम न देकी जोटा कि आगुरी होता कि इंदिरावास रे प्रोवाइड करा होता आफ्टर द कंस्ट्रक्शंस सेटा को एमती तीनटा फेज रे डिवाइड कराई प्रीवियसली एटा कौन थिला ना मन अच्छे लास्ट गवर्नमेंट थिला बिजू पक्का घर दैट्स ओके नहीं किसी भी हसा हसी करते नहीं ज्योति नहीं देन तापर आसला मधुबाबू पेंशन योजना सो इट्स ए बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ओके तो इट प्रोवाइड्स द इनकम सिक्योरिटी टू एल्डरली पर्सन्स विडो पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी एंड अदर vulnerable ग्रुप्स एंड ओडिशा बजेट 2025-26 रे बजेट प्रोवाइड करते 5,370 CR ओके तो राइट अबाउट मधुबाबू पेंशन योजना बेनिफिशियरीज कौन कौन मेक द नेक्स्ट हेडिंग मधुबाबू पेंशन योजना तब लिखो बेनिफिशियरी एज 60 to 79 ₹1,500 पर मंथ ओके से कौ मैंने कवर होती एल्डरली विडो एंड ट्रांसजेंडर देन एज 80 रू एबव ₹3500 पर मंथ जोटा कि वार्धक्य भत्ता बुझिपार सेटा देन पर्सन विथ डिजेबिलिटीज तार दीटा कैटेगरी अच्छी दैट कौन 40 to 79% डिजेबिलिटी थिबा फॉर देम ₹1,000 पर मंथ तापरे आसला सिवियर डिजेबिलिटीज माने कौन दैट जोटा 80% रु अधिका थिबे एंड
सीवियर डिसेबिलिटी रे आउ गोटे कैटेगरी से अच्छी मधुबाबू पेंशन योजना रे, दैट इज एज 80 प्लस जो माने थिबे से मानू प्रोवाइड कराला 3,500 रुपीज पर मंथ. देन एडिशनली स्पेशल मेडिकल केसेस, स्पेशल मेडिकल केसेस जेमती कि केसेस होची कोन दैट HIV गला लाइक दिस दोज फॉर देम ₹1,000 पर मंथ. ओके, सो दिस इज द थिंग जोटा कि एक्चुअली रे देखिया पाई गले ओडिशा गवर्नमेंट रो गोटे इनिशिएटिव जो थरे कि ऑल टुगेदर दिस इज नॉट ऑल अबाउट फॉर द सीनियर सिटीजन और समथिंग. जो माने ट्रांसजेंडर अच्छी से भी पाइबे दैट ₹1,000 पर मंथ. सो एटा को तमे देखो बट द इंटेंशन बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स कहीं स्कीम्स गुड़ा कहूँ दैट यूपीएससी सेगमेंट रे यू विल गेट दोज डाटा सीट्स शून्य रहीगला कि अन्य कौन इन्स्टिट्यूट रहीगला डाटा एंड फैक्ट सीट्स तुमको मिल जाऊँगी. ओपीएससी सेगमेंट से जिन ना मु आर तो पीडीएफ टा तुमको प्रोवाइड करदेवी. बाकी रेस्ट रहा आपको छाड़ी सारापर से स्कीम्स गुड़ाक एक्चुअली रियलिटी केमी मैंने ग्राउंड रे केमती इम्प्लीमेंटेशन होची तो सेटा को भी देखिबार अछि. गॉट द थिंग्स. तो एथुरु तुम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके को पार्ट रे तुम पुट करि परिबो ऑलरेडी मेंशन हे कि अछि. सो इट्स नाउ योर टास्क. मु जदि से जगह किछिटा जिनस मेंशन कर जदि क्वेश्चन सेठरो आसी काहे कहूची दैट प्रीवियसली ऑलरेडी क्वेश्चंस आसी फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स 86 क्वेश्चंस जो थे केला मु चाहिबी जदि एसडीजी को मु पुट करि परिबे एंड केवल मु चाहूँ केवल तुम एसडीजी को ए टाइप रो पुट न करके सपोज दिस इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ 2024 GS1. ओके, ग्रुप ए रे पचार 15 मार्क्स रो क्वेश्चन थिला. सो द क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग एसडीजी 13 अंडर आसला. तो से तुम इंट्रोडक्शन में कौन लिखि पारिबो, कंक्लूजन में तुम कौन लिखि पारिबो एसडीजी को लिंक करके. बट दिस इज नॉट ऑल अबाउट द थिंग्स. ताकू छाड़ सारा पर आम चाहिए आहरी बहुत किसी तरह मुझे जो क्लाइमेट वाला पार्टा पढ़ेबी से क्लाइमेट तुम यू विल गेट टू नो अबाउट कि मुझे आज तार भैल्यूटा केमी पूरे पारि एज एन एग्जांपल हिसाब से स्कीम्स को केमी पूरे पारि. धर पीएम सूर्यघर वाला होगला से जिनसा कहला मुझे ग्लोबल वार्मिंग वाला पार्ट केमी पूरे पारि. कैप्टिव पावर प्लांट्स को लिंक करके मुझे वे फॉरवर्ड हिसाब से देखई पारि ना दैट बर्निंग ऑफ कोल सेट लगी देखो तुम दैट सेंट्रल रीजन ऑफ ओडिशा दैट अनुकूल होगला तालचेर होगला दिस पार्ट्स आर माने कौन अधिका ही टेम्परेचर थाए से समटाइम्स दे आर क्रॉसिंग 50 बेंचमार्क ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस. तो सेठी जदि पीएम सूर्यघर योजना जदि इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट है ओडिशा रे सब्सिडी थ्रो रे हो कि जेमिति भी हो जदि है देन आफ्टर आमर कैप्टिव पावर प्लांट्स उपर तो आमर कौन रेगुलेशंस आसीबो ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट हिसाब से तुम देखई पारिबो से जिनसटा को. तो इंटरलिंकिंग वाला पार्टा को तुमको आउ गोटे क्लास में करदेवी दैट केमी यही सबुतक जिनस जो एग्जाम्पल्स गुड़ा कहूँ कौ क्वेश्चन रो जगह मुझे पुट करें एज एन वे फॉरवर्ड हिसाब से हो एज एन इंट्रोडक्शन हिसाब से हो. देख जदि मुझे गोटे जिन कहबी दैट ये जोटा मुझे कभर करुच्ची मधुबाबू पेंशन योजना धर सोशल सिक्यूरीटी रिलेटेड गोटे क्वेश्चन अच्छी इफ आई एम राइटिंग अबाउट ए स्टार्ट बेस्ड इंट्रो रिगार्डिंग दिस सेगमेंट तापर मु सोशल सिक्यूरीटी को एड्रेस कली जदि ओडिशा स्पेसिफिक क्वेश्चन थी ताठू बेटर कौन हो पार इंट्रो जमती कि एबे रिसेंटली मुझे ऑलमोस्ट ऑल 2-3 जन पिला ऑलरेडी जानी थे दैट अबाउट गोटे गला क्वेश्चन आमर टेस्ट नंबर 11 रे थिला दैट द रैपिड ग्रोथ ऑफ 10 मिनिट्स डिलीवरी सिस्टम कहूँ ना सर से आपको जदि से टाइप रो क्वेश्चन अच्छी दैट रैपिड ग्रोथ ऑफ 10 मिनिट डिलीवरी सिस्टम हैज इंटेंसिफाइड द रिक्स राइडिंग एंड ऑक्युपेशनल हेल्थ ऑफ गिग वर्कर्स. ओके, दिस इज ए क्वेश्चन. सो मत जब तार इंट्रोटा जब दबार अच्छी से इंट्रो रे इफ आई विल पुट नीति आयोग्स गिग इकोनॉमी रो क्विक कॉमर्स सेगमेंट रे गोटे डाटा मु पुट कली दैट 2020 2019
20 रे इट वाज अबाउट दिस मच सपोज मु कहूँ एक्स थिला एंड सही जगार रे तार प्रोजेक्शन नीति आयोग रो प्रोजेक्शन होची बाय 2029 30 इट इज गोइंग टू बी थर 3x कि 4x 3x या फिर 4x तो सेटा को मु तार कौन करी ना लास्ट को कौन करी दैट कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजीज ऑफ डिग्निटी ऑफ वर्क को लिंक करके जब गोटे मु इंट्रो लिखे आठ बेटर इंट्रो आप पारे निजे भावत तो फॉर दैट रीजन दीज आर ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू इन दोज सेगमेंट कि मु स्टार्ट बेस्ड इंट्रो लिखे कहीं रैंडम इंट्रो समस्त लिखुन मत जो डिफरेंट हबार अच्छे देन आफ्टर आई हैव टू पुट दिस टाइप ऑफ थिंग्स ओवर देयर से क्वेश्चन को टाइप रो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन थी देन आफ्टर आई विल स्टार्ट विथ द स्टार्ट बेस्ड इंट्रो बाय प्रोवाइडिंग सम डाटास डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन थिले स्कीम्स को पुट करके मु आंसर लिखवा स्टार्ट करिवे जदि कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन थी देन आफ्टर धर पीएम स्पीच हो गला कि प्रेसिडेंट स्पीच हो गला सेथरु नै कि मु स्टार्ट करिवे तो सेथि लगी कहूचे दिस थिंग्स मे बी हला तुमको लागुथो कि काहे के हम स्कीम्स गुडा विषय जानुचे बट काहे के आर अचीवमेंट्स विषय जानुचे बट दैट इज द प्रैक्टिकल रीजन काहे के हमको जानिया दरकार कहीं ना एथरक 5690 पिला मेंस लिखुछन 5690 पिला भितर तुम कॉपी डिफरेंट हेले तो तुम जीव ना क्वालिफाई करिवो फॉर दैट रीजन दिस थिंग्स आर नीडेड एंड आप कहीं भी फोकस करना कहीं मु जेते आज पर्यटन जिते जन पिला भी देखिले ऑल ऑफ देम आर डूइंग द सेम थिंग लास्ट को मत डाटा एंड फैक्ट्स लगी नेशनल लेवल मटेरियल्स किसी गोटे उठे दिए से किसी जिन पढ़ीदे लिखिदेले तुम मैंने भी कर जो मैंने मेन्स लिखिं सर आप मेन्स लिखिं तुम्हें मेन्स लिखिं नितेश तुम्हें भी मेन्स लिखिच तो सेम थिंग बट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क ना इट्स अ ट्रेडिशनल अप्रोच कौन चेंजेस आनीपर जदि मुझे सेम जिन कहूँ जदि पॉवर्टी को लेकिन गोटे जिन अच्छी लास्ट को जब गोटे बॉक्स भितर करके गोटे किसी गोटे जिन ऐड करी द स्कीम्स लाइक धर दिस गरीब कल्याण अन्न योजना एंड मधुबाबू पेंशन योजना ऑफ इंडिया एंड ओडिशा रेस्पेक्टिवली जब मुझे लिखिली are actually implementing the grassroots developments to achieve India's goal over there in the no poverty from the SDG wala segment. If I am writing that rather than केवल mention कर दो कि government is actively taking the initiatives to eliminate the no poverty वाला situation दीटा जिनस वाला मुझे पुट कली दरकार पड़े तले स्टार्ट भी दे दियो गोटे दैट बजेट एलोकेशन एतिक होइतला कि अचीवमेंट सेगमेंट रे एतिक रहितला सेटा ही तुमको डिफाइन करिवो सेटा ही गोटे पॉइंट थो जे गोटे क्वेश्चन में तुमको 2 मार्क एक्स्ट्रा सेठी मिल पारे कि 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल पारे गोटे क्वेश्चन में 15टा क्वेश्चन तुम जाओ लिखवा लगी तो सेमती गोटे मार्क 2 मार्क एक्स्ट्रा हेल्ले 4टा जाक पेपर यू आर गोइंग टू 60 मार्क एक्स्ट्रा तो मतलब कौन फरक पड़े मोर इंटरव्यू केते मार्क रोचे केते मार्क न रोचे अप्रोचटा को सही हिसाब से बना इनफैक्ट आवर स्टूडेंट नितेश ही इज टू डू डेली बेसिस रे करंट अफेयर्स ओडिशा सेगमेंट रो कौन आसी परिबो ताको आमे केमिति ये करि परिबा इज अ लाइब्रेरी स्टूडेंट तो आमे बसी डिस्कस करू ऑलमोस्ट ऑल बहुत टाइम रे आमे डिस्कस करू लास्ट टाइम भी करंट अफेयर्स मैगजीन जोडा पब्लिश हेतला द सिलेक्टेड टॉपिक्स वाज फ्रॉम नितेश इटसेल्फ एंड ओडिशा स्पेसिफिक थिला कहीं ना तुम जो भी आंसर लिखुच जहाँ भी करूछ ताको जो माने इवैल्यूएट भी करूछंती से माने एट एज ऑफ 50 55 रे अछंती जने किछि करन न करन से न्यूज़ पेपर ही पढिबे तो सही रिलेटेड फैक्ट कहीं तुम न पुरेबो got the things so this one is complete now go to the let's go to the second zero hunger वाला part तो zero hunger वाला part रे कौन रहला ए पीडीएफ टा दरकार अछि मु पठै देबी समस्त ओके मु ग्रुप रे हल्ला पकै देबी पीडीएफ टा so in the part of हे ना दे ऐड हे ना दे कर देबो आई विल डू दैट वन क्लास सरला पर आप इनफॉर्म करदेवे मु करदेवी ओके
So the next part is zero hunger. SDG 2 तो कौन गोल रे कौन अचीव करिया लगे अछि एंड हंगर एंड ऑल फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन. ओके हंगर और माल न्यूट्रिशन ना एनी फॉर्म जहाँ भी अच्छी ताको आम कौन बंद करवा एंड करवा. तो कौन एन्श्योरिंग डाइटरी डाइवर्सिटी, मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन, स्टेबल फार्मर इनकम एंड सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड प्रोडक्शन. ओके सो व्हाट आर द स्कीम्स? पीएम पोषण द स्कीम, द फर्स्ट स्कीम. तो यहाँ कौ पार्ट को मत गोटे जिन कह यहाँ कौ पार्ट को एड्रेस कला टार्गेट रो पीएम पोषण ना. दिस इज द स्टेटमेंट एंड हंगर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, बट इट इज ensuring डाइटरी डाइवर्सिटी. ओके आउ गोटे जिन मुझे कहूँ दिस इज द स्कीम दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. आई थिंक हाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर यहाँ आसूँ, बट सक्षम अंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर आसुनी. दिस इन कमिंग अंडर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. बुझिपार देन पोषणटा अच्छे एंड पोषण 2.0 जोटा कि सक्षम अंगनवाड़ी सहित अच्छे दैट इज कमिंग अंडर दैट मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन वाला पार्ट रे एंड ऑल्सो एन्श्योरिंग डाइटरी डाइवर्सिटी. तो तार रिलेटेड कौन कौन फैक्ट अच्छी मुझे क्विक रे तुमको देख यहाँ तुम ये अच्छी तुम पाखे मैंने मिल जाए तुमको से ये कर. तो आउ कौन कौन जिनस अच्छी मुझे तुमको कहूँ. देख पीएम पोषण नेक्स्ट हेडलाइन पीएम पोषण. सो इट हैज बेसिकली न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड पीएम पोषण जोटा कि तारा माने कौन कवर कर अच्छी. सो व्हाट आर द गोटे मिनट मुझे बसी जाऊँ. ओके सो व्हाट आर द पीएम पोषण न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड दीटा पैरामीटर्स डिवाइड है. That primary from class 1 to 5 and second one is upper primary class 6 to 8. So in the primary part class 1 to 5 रे minimum 450 calorie and 12 grams of protein per day. Then upper primary class 6 ru class 8 वाला part रे minimum 700 calories and 20 gram protein per day. ओके एंड एथरे जो अचीवमेंट वाला पार्टा अच्छी दिस अचीवमेंट वाला पार्टा को सेटा को भी देखी दे था. अप्रोक्सीमेटली सर्व्स अप्रोक्सीमेटली 11.20 CR चिल्ड्रन मान को प्रोवाइड करा होची एंड द फंड एलोकेशन इन अबाउट 10.36 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स. गॉट इट. प्रीवियसली एटा कौन थिला क्वेश्चन एंड तब किए इम्प्लीमेंटेशंस कौन को एजेंसी करथिला अक्षय पत्र फाउंडेशन. ओके सो नेक्स्ट कम्स टू दैट सक्षम अंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 इंटीग्रेटेड सप्लीमेंट न्यूट्रिशन ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड मैटरनल चाइल्ड सर्विसेज. ओके तो एथरा अचीवमेंट होची कौन 2026 ऑफिशियल डाटा को होची दैट 7.68 कोर स्टूडेंट मानों को चिल्ड्रन मानों को एंड 57.90 लाख प्रेग्नेंट वुमेन एंड 56.44 लाख लैक्टेटिंग मदर्स मानों को एंड 15.62 लाख एडोलेसेंट गर्ल मानों को ये प्राइमरी बेनिफिशियरी रे जाउछन. ओके सो मु कहूनी कि तुम चार्टा जाक फैक्ट को मन रख जो नंबर्स. द थिंग इज दैट सक्षम अंगनवाड़ी स्कीम इटसेल्फ को सेगमेंट रे काम करुचे चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वुमेन
lactating women, lactating mothers and adolescents girls. So मत गोटे जिनस समस्त पाखे फोन अच्छे, check the definition of adolescent girl. देखो चेक करी को what do you mean by that one? Exactly. Got the things? आ गोटे जिन मेंशन करो दैट बजेट एलोकेशन 2026-27 रे फाइनेंशियल ईयर 26-27 लगी 23,000 कोटी टंका प्रोवाइड कराई 23,100 कोटी टंका प्रोवाइड कराई. So what do you mean by SNP? SNP रो माने कौन? Nutritional support via SNP. That is supplementary nutritional program. Okay. So there are basically 3 dimensions. केमती एटा को लिखिबो धर एज ए स्कीम हिसाब रे तुम जब केतले पुट करूच एज एन एग्जांपल हिसाब रे नले कौन सी जगह डायग्राम पुट करूच पुट इट सक्षम अंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 इन ए बॉक्स. फर्स्ट वन न्यूट्रिशनल सपोर्ट भाया SNP. The second one is early childhood care and education. The third one is development of Anganwadi infrastructure. ओके बुझेला. देन तापर आसला PM किसान 3टा इंस्टॉलमेंट केते टका लिखा है केते टका लिखा PM किसान में पर इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपीज फॉर 3 इंस्टॉलमेंट्स. ओके मत गोटे कथा कह सपोज सौम्य इज ए फार्मर. ओके टोटाल गोटे वर्ष भितर से केते बेनिफिशियरी उठे पार फ्रॉम द गवर्नमेंट थ्रू आउट द दीटा कंसीडर करो दैट नेशनल लेवल स्कीम थ्रू रू हो कि स्टेट लेवल स्कीम थ्रू रू केते कहतु डीबीटी तो सेटा तो कंपलसरी केते टका I am not asking about the Kisan credit card. Credit card you have to repayment, but the benefits that you are getting, financial benefits from the government, if you are a card holder. You are right, 10,000 through PM Kisan. This is providing 4,000 rupees in 2
installment. सर जानते तो आपण समृद्ध किसान जान नथिले तो सेटा ऑल्सो इट्स ऑल्सो गिविंग ए पार्ट देयर इन द एमएसपी वाला पार्ट रे एमएसपी जदि हला एबे राइस रो करंट एमएसपी केते अछि 3100 सेतरे हला स्टेट केते दोउची सेंटर केते दोउची the center is providing 2300 and the state is providing 1800 rupees. Okay, ठीक है. There is set of parameters na set and the card that you are holding, that the ration card है गला, so all those things. There's a set of parameters. सेटा भी मु क्लास रे कवर कर देबी अपकमिंग एग्रीकल्चर वाला सेगमेंट जतले आसीबो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट रे मु जेटा कवर कर देबी एग्रीकल्चर जेमती बेसिकली दुईटा क्लास करके कंप्लीट ब्रॉडली चारटा सेगमेंट अच्छे एग्रीकल्चर रिलेटेड टू ज्योग्राफी एग्रीकल्चर रिलेटेड टू इकोनॉमी गवर्नेंस एंड सोसाइटी गोटे दिन कवर करा हबो एंड सॉरी गवर्नमेंट गवर्नेंस आउ सोसाइटी टाको गोटे दिन रे कवर कर देबू आउ रेस्ट रहा आरटा जोटा ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी टाको गोटे दिन कवर कर दो हैला से रिलेटेड जहाँ किछटा भी स्टार्ट थिबो केमिटी आंसर राइटिंग रो टेम्पलेट को टाइप रो रखिबार अछि कोन करियार अछि विल डू दैट वन ओके सो पीएम किसान दैट टारगेट होछि कोन दैट 6000 रुपीस हमें प्रोवाइड कले देन पीएम किसान ने एटा सेंट्रली फंडिंग कंप्लीटली रहिबो एंड आउ गोटे जिनस वैल्यू एडिशन करिथाओ गवर्नमेंट रो एटा गोटे सक्सेसफुल स्कीम इम्प्लीमेंटेशन व्हिच हैज अचीव्ड करेंटली 23rd इंस्टॉलमेंट तार दिया हबो ऑन 20th जून रे माने दिया है 20th जून ने एंड केते फार्मर्स एतरे माने अछंती पीएम किसान नो बेनिफिशियरीज 9.44 CR farmers and the budget is of 18,880 CR. This is a flagship scheme from central government. Okay. Then tapare this is coming under कौन रहिला हमर stable farmer income. Then asilla sustainable and climate resilient food production. ता लगे कौन पीएम फसल बीमा योजना ओके सो पीएम फसल बीमा योजना रे कौन दैट क्रॉप्स एंड वेदर शॉक्स को ये करे लगे अचीवमेंट होची कौन 2026 अराउंड 1.9 लाख कोर हैज बीन पेड फॉर द बेनिफिशियरी मोर देन 23 CR फार्मर एप्लीकेशंस तो सेतरा आउ किछटा जिंस लेखो एथरे तीनटा रिस्क साइकिल थाए पीएम फसल बीमा योजना रे तीनटा रिस्क साइकिल थाए Rupesh, you have some eye problem? No, you are just blinking now. For that reason, I am asking. तो देखा हो नहीं तो नागू पड़े ऐसे. 3 risk coverage cycle. Okay. तो सेत्र कौन रहेला? That pre-planting रे कौन आसे? Prevented sowing. And planting risk due to lack of rainfall. Then second one, mid season. सेतरे बेसिकली कौन ना स्टैंडिंग क्रॉप्स जो गुड़ाक थाए सेतरे फ्लड और ड्रॉफ्ट कवरेजटा से आसो मिड सीजन ने देन पोस्ट हार्वेस्ट मैक्सिमम 14 days पोस्ट हार्वेस्ट
क्रॉप ड्राइंग, क्रॉप ड्राइंग सुखेवा. ओके, सो देयर आर द 3 पैरामीटर्स. यही पैरामीटर्स बेसिस रे पीएम फसल बीमा योजना रे फंड एलोकेशंस हुए. ओके, सो नाउ कम्स टू द ओडिशा वाला पार्ट. दिस इज अ नेशनल श्री अन्न अभियान को कमिंग अंडर मिलेट मिशन. सो एथरे कौन केबे इंट्रोड्यूस होइतला लेखो 2017 and it has a 4 pillar strategies. First one, production and productivity. The production and productivity with you need paper. Okay. जार पेपर दरकार थो कहब, यू कैन टेक द पेपर. प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी भितर अचीवमेंट रो कौन गोल होउची दैट प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग and providing high yield seeds. Then the second one, processing infrastructure. Financing through women-led SDGs, जोटा जो तुम कहूल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. And farmer producer organization, APOs. Then the third pillar, public consumption. Through public distribution system, through midday meals, also coming under PM Poshan. Through ICDS and Anganwadis. Then the fourth pillar, marketing and retail. Through Millet Shakti Cafe and Subhadra Bazaar. What do you know by Subhadra Bazaar? तो मिलेट शक्ति कैफे रे हमें मिलेट्स रिलेटेड जिनस गुड़ा प्रमोट करते. सुभद्रा शक्ति बाजार कौन कौट लगी अच्छे कौन Subhadra Shakti Bazaar is there for the promotions of individual SDGs productions. से धूपकाठी अगरबत्ती ठू नहीं कि अप टू साड़ीज पर्यंत एंड जमती क्राफ्ट्स रिलेटेड थिंग्स गला ऑल दोज थिंग्स जोटा कि मिशन शक्ति थ्रू रे प्रमोट होता है. दैट्स द मार्केट प्लेस फॉर ऑल दोज वुमेन लेड एसएचजीज रो प्रमोशंस लगे. एंड दैट्स ऑल्सो रिटेल शॉप ये गोटे अच्छी सीआरपी पाखे गोटे अच्छे ये टाइम मिले जाए बुलिकी आस. ओके, you will get to know about that. Subhadra Shakti Bazaar रे what's the thing over there, को SSGs रो कौन अच्छी particularly suppose धर SSG there in कलाहांडी धर टर्मेरिक पाउडर रिलेटेड रो थिबो तो सेटा हला पूरा भी मेंशन हे कि थाए
you will get to know. In fact mu gote din suggest karibi, this is not the right time, but if you want to really add some values जोटा कि तुम टेक्स्ट बुक रे ना कि तुम नॉर्मल गवर्नमेंट रिसोर्सेस रे न मिलुची, डू पेड ए विजिट टू दैट कलाभूमि एंड सुभद्रा शक्ति बाजार. यू विल गेट ए लॉट ऑफ इनफॉरमेशन जोटा तुम चाहिए लिखिपर इन योर आंसर्स, बिकज तांको पाखरे ऑब्वियसली फोटो हेरिका क्लिक करिया मना थाए, तो यू विल गेट ऑल दोज डिटेल्स रिगार्डिंग ईच एंड एवरी इंडिजिनियस कल्चर होगला, टेराकोटाज होगला कि रिगार्डिंग द सारीज होगला एंड एवरीथिंग. ओके केते एसएचजीस मानकर को को सेगमेंट रे कोन काम अछि से डिटेली मेंशन हे कि थाए. ओके एटा सरला. देन आसला कोन श्री अन्न अभियान कोटा को टार्गेट कला एथरे माल हाँ डाइटरी ये बस आओ न्यूट्रिशन फॉर द मैटरनल एंड चाइल्ड बोला सेगमेंट को. देन द नेक्स्ट वन समृद्ध कृषक योजना 2026-27 बजेट एलोकेशन दिस मच. तार कौन कौन डायमेंशंस अच्छे इट दिस वाज आमर मेन्स रो नितेश आमर मेन्स रो मैगजीन ने बाहर थिला ना लास्ट ईयर करंट अफेयर्स वाला मैगजीन ने. ऑलरेडी मेंशन करके रखी दैट 2 इंस्टॉलमेंट्स 2000 एंड रिगार्डिंग द एमएसपी शेयर जो कि सेंटर रोचे 2300 अराउंड एंड स्टेट रोचे 800. ओके दिस मच ओनली. देन द थर्ड वन मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, again the term adolescent girls. For the state perspective रे it has been described over there from the age 15 to 19. This is why I have asked the question. समस्त नीचे मारी के देखो. गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रो डॉक्यूमेंट्स रे it has been mentioned adolescent girls is going to be 15 to 19 एज भितर. बुझीगला स्वाति राइट गॉट द थिंग्स. देन केतरा दिन मु कहूँ मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना रिलेटेड रो राइट डाउन ऑल दोज थिंग्स. इट इज कमिंग अंडर 2 कैटेगरीज दैट वुमेन एंड चिल्ड्रेन अंडर 5 माने 5 years. that women lagi कौन रोचे that maternal support for pregnant women and lactating women by mothers. So तांको कौन सपोर्ट प्रोवाइड करा होची that take home rations THR and THR रे कौन कौन रोचे vital nutrients, millet based foods and eggs. Then children under 5 आर दीटा सेगमेंट अच्छे सिवियर एक्यूरेट माल न्यूट्रिशन सैम से लगी रोचे कौन कवर्ड दे आर कवर्ड अंडर पूर्ण आहार इनिशिएटिव. दिस इज ए स्कीम पूर्ण आहार इनिशिएटिव जो माने सिवियर माल न्यूट्रिशंस रे अच्छे. देन मॉडरेट एक्यूरेट माल न्यूट्रिशन एंड सिवियरली सेकेंड पॉइंट मॉडरेट एक्यूरेट माल न्यूट्रिशन
and severely underweight, SUW. गवर्नमेंट कौन प्रोवाइड करछे एमानंकु दैट छतुआ एंड एग एंड आज जाए कि गोटे जिन देखिए दैट पूर्ण यार अभियान जोटा सर कौन कौन कवरेज आसुचे ओके एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट छतुआ एंड एग ओके दैट्स योर होमवर्क ओके देन द नेक्स्ट स्कीम sorry 23 because MSP is 3100 ना 3100 रे से 2300 रहिला और 800 रहिला ओके सो नेक्स्ट द ममता स्कीम कौन है बजट एलोकेशन 320 CR एडिशनली 180 CR थ्रो PMMVY. What do you mean by PMMVY? मातृबंधना योजना ओके सो कौन ममता स्कीम्स रे अच्छी राइट डाउन दोज थिंग्स ममता स्कीम्स रे गर्ल्स रो सॉरी गर्ल चाइल्ड पिछा बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड रे 12,000 रुपीज एंड बॉय चाइल्ड रे 10,000 रुपीज प्रोवाइड करा होची सो एथरे भी दुईटा इनस्टॉलमेंट रे प्रोवाइड करा जाए यू नो कार आइडिया अच्छे किसी आइडियाज दुईटा इनस्टॉलमेंट फर्स्ट 3,000 रुपीज प्रोवाइड करा जाए इन द अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी रे व्हेन दैट यू हैव टू बी चेक्ड बाय द अंगनवाड़ीज ओके तो सेतबले तुमको 3,000 रुपीज प्रोवाइड करा हबो आफ्टर 10 मंथ्स यूजुअली आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड रे सेतबले तुमको रेस्ट अमाउंट जोटा थिबो सेटा प्रोवाइड करा हबो दैट्स अप टू इन ए डीबीटी मोड ओके एंड द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज थ्रू अंगनवाड़ी गॉट द थिंग्स and it's a two child policy the most important thing ममता स्कीम दुई जन चाइल्ड लगे ही गवर्नमेंट प्रोवाइड करिवो ए जिनस बट द एक्सेप्शन इन ओडिशा इज दैट बट द PBTGs it's not limited to 2 okay but the criteria is going to be universal for everyone for PBTGs and the general women that girl age must be above 19 then only she is applicable for this scheme 19 got the things PBTGs वाला जिनसटा लिख लो so this is about zero hunger सरला तो यहाँ आम कौ कौ GS सहित कवर हो GS2 and GS3 सोशल जस्टिस रो पॉवर्टी वाला पार्ट हंगर वाला पार्ट न्यूट्रिशन वाला पार्ट वेलफेयर डाइवर्सिटी वाला पार्ट सफिशिएंट एग्जांपल मिलला केमती पुट करिवार अछि को जगह रे देन GS3 एग्रीकल्चर इरिगेशन PDS फूड सिक्योरिटी कॉर्प इंश्योरेंस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मिलेट शक्ति सुभद्रा बाजार फार्मर्स इनकम थ्रू आउट समृद्ध कृषक योजना PM किसान योजना गॉट द थिंग्स सो एटा केमिति भी तुम आंसर राइटिंग रे यूज करि परिबो हियर आर द स्मॉल पार्ट्स थ्रू द टेस्ट सीरीज तुम देखिबो ए सब तो जिनस ऑलरेडी कवर होउछ ओके द क्वेश्चंस उडा कवर करूछ सो द नेक्स्ट वन गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग इज इट बोरिंग चलछि थ्रू आउट 17 SDG यू विल गेट ए पांचटा पीपुल वाला सेगमेंट रा पांचटा जो कंप्लीट हो जिवो देन केवल प्लानेट वाला पार्ट सम अदर स्कीम्स आर गोइंग टू बी वैल्यू एडेड बट ताकू छाड़ देले रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी द सेम एंड सेम मोमेंट तुम देखिबो दैट गोटे स्कीम्स को केतरा जगह रे यूज करि परिबो एंड आफ्टर दैट यू विल मेक ए फाइनल नोट गोटे 2 पेज 3 पेज रो गोटे स्कीम्स रिलेटेड रो थिबो सिलेबस रो सब एंगल रो क्वेश्चंस आसले तुम जन सेडा पुट करि परछो लास्ट मोमेंट रिविजन्स लगे गॉट इट सो
the good health and well-being. What's the goal seeks to achieve? कौन? Achieve universal and affordable health care. So this is to achieve. कहा through रे? By strengthening primary health care, maternal and child health, diseases prevention, diagnostic, medicine, insurance and public health preparedness. तो यही डायमेंशंस गुड़ाक 1 2 3 4 5 6 7 ये 7टा डायमेंशंस लगी. देयर आर ऑल द स्कीम्स, नेशनल लेवल स्कीम्स एंड ओडिशा लेवल स्कीम्स. ओके, गोटे गोटे करके देखीदेवा, टिके जल्दी करिया है. भोक गलानी को मानू, भोक गलानी बहुत जोर. ओके, आउ क्या को बिस्कुट फिस्कुट किसी खाइब मगे दो, पॉपकॉर्न. ओके, सो बेसिकली हाँ सॉरी क्वालिटी एजुकेशन इज 4. सो गुड हेल्थ वाला पार्ट रे आयुष्मान भारत दिस वन अचीवमेंट हो कौन दैट अप्रोक्सीमेटली दिस मच एडमिशंस एंड एति. हाँ कौन कहूल इंश्योरेंस कवर हो. सो आयुष्मान भारत रे आउ किछटा जिनस होला मु तुमको कवर माने ये करूची एडिशनल वैल्यूज दैट आयुष्मान भारत वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड health assurance scheme providing a health coverage rupees 5 lakh per family. Per family. Per family. Then no cap on family size. Family size रो कौन सी cap नहीं. सो कौन कौन एथरे तुम रहा गोटे आयुष्मान कार्ड रहिबो एंड आयुष्मान मित्र हेल्थ हेल्प डेस्क. ओके, फ्रॉम द फॉर द असिस्टेंट पर्पस. It also covers 3 days pre-hospitalization and 15 days post-hospitalization expenses. Got it? Then the second one, आयुष्मान भयबंधन. तो एथर कौन 5 लाख पर ईयर, नो इनकम कैप, किसी एटा समस्त लगे एप्लिकेबल, नो इनकम कैप, नो एसेट रेस्ट्रिक्शंस माने बेनिफिशियरीज मान लगे. No economy or education aspect is there for the beneficiary. Then Ayushman Arogya Mandirs. In the Ayushman Arogya Mandir re 12 healthcare schemes services, 12 healthcare services are absolutely free. So एथरे तुम दीटा जिनस मेंशन करो दैट सब हेल्थ सेंटर लेवल दीटा कैटेगरी अच्छी. सब हेल्थ सेंटर लेवल जो थे कि 105 एसेंशियल मेडिसिन्स and 14 diagnostic tests are free.
Then the second one, primary health center mandirs. ସେଥିରେ 171 medicines and 63 diagnosis tests are free. Okay, then Mission Indradhanush. Mission Indradhanush रे कौन होउची that 12 critical diseases लगी free vaccination provide करची government of India. Got the things? Okay. Children मान को लगी केवल Mission Indradhanush. Then PM Abhim. এটা কেবে ইনিশিয়েট হয়েছিল PM Abhim? জ্যোতি দেখো PM Abhim কেবে হয়েছিল? Sure. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, PM Abhim, your nata. Okay, so the basic purpose of PM Abhim is strengthen the healthcare infrastructure, by filling the central gaps in public health networks, primary care and critical care of families across both rural and urban areas. मुझे करूनी तुम यहीटा को पूरा देखिकी बनईदेव दैट कौ सेगमेंट रे कौ स्कीम्स गुड़ाक एप्लिकेबल अच्छी है. गॉट इट. देन द सेकेंड, दिस इज अबाउट इंडिया. देन ओडिशा, वैल्यू एडिशंस एंड वेरीफाइड एविडेंस, गोपबंधु जन आरोग्य योजना इंटीग्रेटेड विथ PMJ को कौन पढ़ी दियो फर्स्ट. दैट एक्सपेंड्स हॉस्पिटल एक्सेस एंड फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन. The achievement 1.30 CR families and माने families जो थे क्या आसुन के 3.46 crore people through the network more than 29,000 hospitals. So इतरे मुझे स्टाइल ला अब वैल्यू एडिशंस कहूचे लेखो मैनेज्ड बाय स्टेट हेल्थ अथॉरिटी, स्टेट एश्योरेंस सोसाइटी, मैनेज्ड बाय स्टेट Health Assurance Society. It has replaced that Biju Swasthya Kalyan Yojana. बुझिपारलो. Financial coverage 5 lakh per year to a male person in secondary and tertiary hospital. And additional 5 lakh for women, means apart from this 5 lakh women मान को लगी अच्छी तथापि आउ additional 5 lakh जाए women मान को लगी. Got it. Then target groups को माने रहिबे एथरे माने को माने अवेल करि परिबे गोपबंधु जन आरोग्य योजना. Any idea? ज्योति? No idea. सौम्य? किसी आइडिया? रुसवानो? नो आइडिया.
that household registered under National Food Security Act and state food security schemes. Also the existing card holders जो मैंने previously, because this was replaced that बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना को replace कराइथिला, तो सेथिला गेला it was there in the controversy that whether the hospitals are not accepting बिजु स्वास्थ्य कल्याण card. So government taken the initiative, no, let's do one thing, those who have already registered there in the बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना से कार्ड होल्डर मैंने मध्य गोपबंधु जन आरोग्य योजना रे अवेल करि परिबे. Got the things? Then Niramaya. Why it is there, Niramaya? Free medicines. Okay. So 100% free medicines जो थे कि 570 essential medicines cover होज. It is available through 24/7. And Odisha is the pioneer in this segment by the distribution of the drugs, because Odisha पाखरे 1102 drug distribution centers अच्छे 24/7 जोटा कि एक्टिव है कि अच्छे. ओके, तो यहाँ कौन अच्छे PHC, CHC एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस रे. देन निदान. इटा रिड्यूस डायग्नोस्टिक कॉस्ट को इट इज समहाउ इट्स सम सेगमेंट रे फ्री अच्छे इटा निदान ने. ओके, तो एथरे फ्री डायग्नोस्टिक मेडिकल टेस्ट and it was introduced in 2018. Available for both inpatients IPD bracket लिखो IPD and outpatients OPD. Okay, so the budget allocation is 229 CR for the financial year 2025-26. Got it? Government initiatives in the health infrastructure programs. You can write this one. You can in fact put both all the points. ये सब points को mention करी परिबो चारटा जंग point को. Okay. Then आसला संपूर्ण. संपूर्ण रो full form hardly का को मन थिबो मन अछि. संपूर्ण फुल फॉर्म होचे शिशु एवं मातृ मृत्युर पूर्ण निराकरण अभियान. राइट इट. शिशु एवं मातृ मृत्युर पूर्ण निराकरण अभियान. The basic objective of this scheme is that targets maternal mortality rate. GS1 ने भी मेंशन कर परियो सोसाइटी वाला पार्ट रे. ओके, so it was launched there in 2015. Later on it has been added that एटा केवल MMR को टार्गेट कर नथिला, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को मध्य टार्गेट कला. And
the mother transportations from the rural to urban lagi, urban in the sense means hospitals lagi, it is providing an assistance of rupees 1000 rupees रा assistant government provide करछि संपूर्ण थ्रू रे रूरल रु अर्बन को माने हॉस्पिटल्स को इंटीरियर रूरल्स रु ट्रैवल करिवे लगे ट्रांसपोर्टेशंस नहीं सेटा दिस इज कंप्लीटली you are paying by your own, you have to show that receipt there in the hospital under the scheme. You can जेमती आमर कौन थे गोटे लास्ट को हरिश्चंद्र योजना, to avail the हरिश्चंद्र योजना you have to get a certificate from the sarpanch, then after you can avail that one if you are going to the स्वर्गद्वार. So like that तमें जो माने कौन प्रेग्नेंट वोमेन अच्छी से माने रूरल इंटीरियर रु एटलिस्ट हॉस्पिटल को जिब्बा लगी ट्रांसपोर्टेशंस लगी दे आर गेटिंग पेड 1000 rupees. Okay, but they have to show the bill of the transportations. Okay, whatever the bill cost 1000 rupees will be provided by the government of Odisha. Okay, then एथरे टारगेट कौन थिला? बेसिकली टारगेट इज 15 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हेल्थ रे जो माने लो परफॉर्म करूथिले से 15 डिस्ट्रिक्ट्स लगी थिला एंड लो परफॉर्मेंस कोथरे थिला क्रिटिकल मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स. Got the thing? Okay, then the next one, the fourth one, our data roila, and you can link it with GS2 social justice, health services, human resources, welfare interventions in India and Odisha, GS3 science and technology and applications there in the healthcare. Okay, the fourth one, quality education. So in the quality education se kaun roila? Ensuring inclusive and equitable education, this is the target through universal access, foundational literacy, quality teachers, learning outcomes, digital inclusion, scholarship and employment oriented skills. 1 2 3 4 5 6 ये 6 जांको डायमेंशंस जोटा अच्छी SDG 4 रो will cover throughout these schemes. समग्र शिक्षा ओके यूनिवर्सली एटा तो इट्स ए सेंट्रली की स्कीम स्पॉन्सर्ड स्कीम इट्स ए रेशियो ऑफ 60:40 बट फॉर द 90:, एंड फॉर द यूटीज 100%. ओके सो समग्र शिक्षार कोर ऑब्जेक्टिव कौन अच्छे राइट डाउन इंक्लूसिव एंड equitable quality education. Universal access, point number 1, universal access, 100% GER, gross enrollment ratio, as per NEP, gross enrollment ratio टा कोट आसला NEP थ्रू आसला ना. Okay, so universal access, 100% gross enrollment ratio, preschool to secondary school education. Second point, quality enhancement by improving the learning outcomes. Quality enhancement by improving the learning outcomes. Then bridging the social gaps. Eliminating gender, regional and social disparities.
Then vocational education. By integrating vocational skills from 9th class onwards. Then the 5th point, digitalization. Through smart classes, digital board and virtual labs. So what are the key components? The next lecture, this is an important one, but that reason टिके अधिका रहिबो. What are the key components of Samagra Shiksha? You know about the Nipun Bharat, it would अच्छी Nipun Bharat भी एटा को डिस्क्राइब करवानी सेतरे. So Nipun Bharat, foundation numeracy and literacy by 3rd grade. Then Diksha platform, QR code based Diksha platform रही itself लिखो that it is a QR code based textbook format. Then I will just give you a task. The next point is Vidyanjali 2.0. पढ़ो? पढ़ो? What do you mean by Vidyanjali 2.0? Okay. Nitesh, पढ़ो? Anjanay Anirudh, पढ़ो? The alumni of the school providing some kind of donation for the infrastructural development in that school, apart from the government funding. Okay. Then the next one, Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas. Got the things? These are the key components. Then asla PM Sri. But एतरे देखो आज समग्र शिक्षा रे अचीवमेंट वाला पार्ट टा इट्स अ स्टार्ट बेस्ड फैक्ट एटा कोले तुम तुमरो निजे ये करिवो. PM Sri develops the model schools demonstrating NEP based experimental digital and green education. So इधर केतरे नुआ जिंस अछि लेखो PM Sri. Next topic. What are the key features of PM Sri school? That's smart infrastructure, modern pedagogy, pedagogy भी कहती, what's the actual thing? No idea. Pedagogy. Okay. So from the rote memorization, सही तरह लिखो. Modern pedagogy रे, from the rote memorization to experimental, inquiry driven and regular contemporary based education. Yeah. From rote memorization to experimental, inquiry driven and regular contemporary based education. Then the green initiative. Say three. The key feature of PM Sri. The green initiative. This is just to change the nature of the students, the thought process and the mind of the students. The green initiatives has been introduced. So इतरे कौन लिखा है वो? That eco-friendly campus, featuring solar panels, rainwater harvesting pattern, and street plastic elimination.
ओके दिस इज द फाउंडेशनल वैल्यूज को चेंज करवा लगे गॉट इट देन 21st century skills the next component that compulsory vocational education from 9th class onwards and it also follows our next point mentorship model functioning mentorship model होउची कोन functioning as a hub of academic guidance two-way connections रहिबो got the things models guidance sorry academic guidance last got it then तापर निपुण भारत गला पीएम पोषण जोड़ा ऑलरेडी आम कवर करेचे देन पीएम केवीवाई व्हाट डू मीन बाय पीएम केवीवाई कौशल विकास योजना दैट मीन्स पीएम केवीवाई कौन करुचे स्किल बेस्ड ओके सो सेटा होछ कोन दैट इट्स अ फ्लैगशिप स्कीम अंडर द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होछ तार किए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन ओके दिस मच देन ओडिशा वाला पार्ट अब अधिका टाइम नो अल्प टाइम वी आर गोइंग टू एंड देखो माने दिस इज नॉट कमिंग अंडर द टेस्ट सीरीज बट मु एथि लागि दबा पे चाहूची द आंसर आई जस्ट वांट टू शो यू वन थिंग द अप्रोच ए टाइप रो अप्रोच गुड़ा को हमको फॉलो करिवार अछि ओके मु जेतले की इनिशिएटिव तुमको पीएम श्री रो देखैली कि तापर की इनिशिएटिव तुमको देखैली कहार एटी समग्र शिक्षार you can put all those dimensions in some way or in the other way there in your answers and सेटा ही टिके अलगा रहिबो that's the main agenda देखो I just don't want कि देखो तुम बैच रे itself there are more than 25-30 students but you guys are here तो मोर सब एटा इंटेंशन रहिबो कि बेसी नहीं 10 जन 15 जन एमिति पिला रहंतु जोन कि रैंक नहीं के आसीबे मते भी माने कष्ट होउची कि एत समय से गेला ठिया कि एला सब तो दिन सब पढ़े पे बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग पेड फॉर ऑल दीज थिंग्स बट इट्स आउट ऑफ माय पैशन के नहीं मते ला करिवार अछि जस्ट बिकॉज आई जस्ट वांट द रैंकर्स फ्रॉम दिस रूम दैट्स द ओनली एजेंडा नॉले अननेसेसरी कोन दरकार अछि तुम तो टेस्ट लिखिलो इवैल्यूएट हला कॉपी तुम तोर गल्लो काहे कि मो दिन सब प्रोवाइड करछि दैट्स किछि एडिशनल वैल्यूज तो किछि जगह रे इंप्लीमेंट हला से 30 मार्क रो डिफरेंस तो आसीबो ना that's the only reason अब किछि भी नहीं okay so next comes to that ओडिशा बेस्ड ओडिशा आदर्श विद्यालय समस्त जानछो केतेटा अछि ओडिशा आदर्श विद्यालय केतेटा अछि ओडिशा रे केतेटा ब्लॉक अछि ब्लॉक रे थाए तो ओडिशा रे केतेटा ब्लॉक अछि केतेटा गोटे गोटे वैल्यू को आपन तो सर कहया तो केते 314 okay so आदर्श विद्यालय is 314 normal आदर्श विद्यालय ला अच्छी but additionally कौन अच्छी there are additionally 6 आदर्श विद्यालय अच्छे 5 are there for the mining areas and 1 special आदर्श विद्यालय provide अच्छी okay I also don't know कोड इस स्पेशल वालाटा अच्छे बट डेफिनेटली कोस्टल रीजन नहीं कोड गोटे थाई पारे आइकॉनिक टा भुवनेश्वर रे कोठी 10 किलोमीटर भीतर आइकॉनिक वालाटा आइकॉनिक आदर्श विद्यालय या मु तार डिटेल स्ट्रक्चर टा विषय रे जाइनी मॉडल थिबो कि कोन थिबो
Okay, so it is a entrance based exam for the OAVs also. OAV टा होची entrance based exam रे तुमरो गल्लो, but ताकू छाड़ी सारला परे 314टा ब्लॉक रे अछि, 5टा माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स रे अछि, माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स या फिर दैट माइनिंग माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स रे ला आउ 5टा अछि, आउ गोटे अछि कोन हमरो आइकॉनिक वालाटा जोटा तुम कहलो. इट्स कंडक्ट्स थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम. देन तापर एटा इट्स CBSE बेस्ड मॉडल, CBSE बेस्ड मॉडल रहिला. तापर से टोटल 1.25 lakh students and 5200 educators सेतरेला अछंदी, and it provides from class 6 to class 12th. And the most important wala part, that it's a compulsory 50% should be female. Okay, this social justice वाला पार्ट तुम एटा को लिखि परियो. दैट्स ओडिशा गवर्नमेंट प्रमोटिंग द एजुकेशन रे भी सोशल जस्टिस रे वुमेन एम्पावरमेंट को केमिति बढ़ाउची. फॉर दैट रीजन 50% हैज बीन रिजर्व्ड फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स ओवर देयर इन द आदर्श विद्यालयस. ओके, पोटेंशियल एग्जांपल नॉर्मल जदि देखियो ताल सोशल जस्टिस रे आउ कोन से जिनस रहला देखिया पे गले तो वुमेन्स रिजर्वेशन को तुम एथरे भल से देखै परियो. 99% केसेस रे सही नारी शक्ति बंधन एंड ऑल 1.1:3 रेशियो एई सब तो जिनस ही कहि चलियो. बट दिस example is a additional value to that one. Got the things? And 8 तो मु different बनैला. Okay, then तापर आसला समग्र शिक्षा. समग्र शिक्षा रे that executed by school education program authority. Okay, that लिखिने हो Odisha school education program authority through रे एटा आसे. It's a centrally sponsored scheme 60:40. It is applicable for 4 to 18 years persons को लगे. समग्र शिक्षा ओडिशा. Got it? Side is you. Then समग्र शिक्षा रे आउ किछटा वैल्यू एडिशन तुम ऐड कर दियो. दैट समग्र शिक्षा इज फाउंडेशनल लर्निंग through Nipun Bharat and monthly sharing meeting. And Kasturba Gandhi hostels, again the same, Kasturba Gandhi hostels, smart classroom, vocational training, and the most important thing is that initiative from the recent government, Jadupedi kits. Nitesh, Jadupedi kits कौन? कार आइडिया अच्छी जादूपेडी किड्स? सती मैम, इंटरएक्टिव मॉडल गोटे बॉक्स कंटेनिंग ऑफ फ्यू थिंग्स. सर अपन तो सेम रे अछंती. इनफैक्ट यू आर सर देयर इन द सीएम आल्सो. Here is the thing, जो थर कि बहुत सारा इंटरएक्टिव जिनस अच्छे. द बेसिक एलिमेंटरी एजुकेशन टाकू केमिति आम इम्प्रोवाइज करि परिबा थ्रू आउट दिस थिंग्स. माने से स्लेट टू नहीं कि क्ले पर्यंत ईच एंड एवरीथिंग इज एटा रोचे. स्पेशली स्कूल्स इनफैक्ट दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू प्रोवाइड इट इन द अंगनवाड़ी सेंटर्स ऑल्सो. बेसिक एलिमेंटरी एजुकेशन को टिके एक्सपेरिमेंटल बेस रे कन्वर्ट करिया लगे. ओके, इट्स ए गुड इनिशिएटिव एक्चुअली, बट केते दूर इम्प्लीमेंट होउची सेटा डिपेंड करूची. गॉट इट? देन
आमे पढ़िबा आम भाषा रे पीएम पोषण ऑलरेडी कवर आमे पढ़िबा आम भाषा रे uses as mother tongue in the tribal language teaching to address the early grade linguistic exclusion. So this is basically applied to 6 districts. Okay, तो से 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन एनी आइडिया लेखे those 6 districts are कंधमाल गजपति रायगढ़ मालकानगिरी नवरंगपुर एंड केउंझर कंधमाल गजपति नवरंगपुर मालकानगिरी केउंझर एंड रायगढ़ and the targeted groups are 3 to 6 years. And this part मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन, these are integrations of all those schemes जोड़ा कि हमरो educational scholarship schemes. So एटा को this is also your homework. एटा को ओडिशा गवर्नमेंट रो कौन कौन एजुकेशनल प्रमोशंस लगी स्कीम्स गुड़ा कहला अच्छी स्कॉलरशिप स्कीम्स कौन किसी आइडिया को स्कीम्स अच्छी सौम्य तापरे सेटा हला एप्लीकेबल कहा लगी ट्राइबल्स लगी ओके देन आउ ओडिशा स्पेसिफिक कोडे ज्ञानोदय आओ प्रेरणा तापरे गोदावरी लैपटॉप दिस इज ए फ्लैगशिप स्कीम ओके सो ऑल दिस स्कीम्स एटा को तुम टिके देखि दबो ओके अम्ब्रेला स्कीम जहाँ अंडर रे सब तक जिनस आसुची ओके सो इधर कौन नो दैट नियरली 11 लाख स्टूडेंट्स रिसीव द स्कॉलरशिप इन 2025-26 इसे अचीवमेंट वाला पार्ट 2026-27 रे अराउंड 22 लाख स्टूडेंट्स बैक्ड बाय 2095 CR फॉर द स्कॉलरशिप इंटरवेंशंस ओके ठीक अच्छे सो आम एथर कौन कौन कवर कले GS2 सोशल जस्टिस एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स वेलफेयर स्कीम्स GS1 सोशल एम्पावरमेंट ट्राइबल इंक्लूजन वी आर कवरिंग दोज थिंग्स GS3 स्किलिंग एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल सो एट द एंड you will get to know about one thing that all the syllabus every GS रे गोटे स्कीम्स को आम केमी पुट कर लास्ट को मुझे 17टा स्कीम्स सारी देवी माने जो SDG सारी देवी देन आफ्टर आई विल गिव यू ए फाइनल चार्ट गोटे A3 ताको प्रिंट करके ना मुझे देदेवी प्रोवाइड करदेवी से ईच सेगमेंट थोड़ा एम्प्लॉयमेंट सेगमेंट से सेम कॉलम रे एम्प्लॉयमेंट सेगमेंट सोशल जस्टिस वाला पार्टा गोटे थी तो तादरे कौ स्कीमटा जाऊ दैट्स गोइंग टू बी एन जस्ट लाइक ए रिविजन चार्ट ओके पीरियडिक टेबल टाइप गोटे बनई देदेवी बट ता पूर्व इन डिटेल्स ये सब तो जिन गुड़ाक तुम क्लीयर होगी था ओके देन द लास्ट फॉर टुडे दैट जेंडर इक्वालिटी सो जेंडर इक्वालिटी अच्छी आम सोसाइटी रे अच्छी ज्योति को लगुच अच्छी कौन केमती अच्छी कौन ओके मैडम आप कहतु हैव यू फेस्ड एनी जेंडर इनइक्वालिटी वाला सिचुएशन इन योर लाइफ नेवर बट इट्स स्टिल देयर अच्छा ओके सो कौन आम कौन कले जेंडर इक्वालिटी को आम प्रमोट करें इट्स जनरल क्वेश्चन सपोज यू गाइज आर द सिविल सर्वेंट्स ओके आपण निज जगार धर वीडियो अच्छा या तहसीलदार अच्छा आम तलू आउ जावानी माने एडिशनल तहसीलदार हेरिका आम काउंट करिया ना वीडियो हिसाब से निज काउंट करिया कि तहसीलदार हिसाब से काउंट करिया कि डेप्यूटी कलेक्टर हिसाब से सो कहतु माने सपोज Biraja, what should be your approach? What the things that you have faced in the gender inequality there in Odisha?
बड़ बड़ को So gender equality is in most state in the ground level. So actually, I think the need for value and moral education among the officers, at least the officers. Then, okay then why are you targeting to the officers directly sir, they are the as the Sardar Patel said, foot soldier of governance. That's why they need moral and value education, so and they should. so you are following that top to down approach Yes. Sir, breaking the stereotypes of the people with the help of civil society. okay that's a possible outcome माने निजे तमे थैथिले कोन करथांतो यू जस्ट टेल मी दैट वन बहुत दिजन दिजन मैंने कम्प्लीमेंट अच्छा मैंने घरे लगे जब विमेन मैंने था निजे निजर ही शत्रु था तो फास्ट जो मैंने अवेयरनेस बिल्ड करने जमी धर मुझे जोटा कहे ओडिया कल्चर था शाशु बहु एमती तो शाशु ही बहुर मैंने ये करें करते तो भितर जब आम जो अवेयरनेस रेस्पेक्टा तो नीडटा जो जनवा कि यार नीड हूँ मैंने तुम ये नीडटा फुलफिल कर यार ये नीडटा ये फुलफिल कर रेस्पेक्टा बढ़ी एंड पर्टिकुलरली जदि हले मु कहबी हां को Sir, global successful models को implement करिबा that for C led initiatives, C led initiatives, he for C United Nations framework successful models. ही फॉर सी Implement करिए awareness spread करिए पे what should be the contribution of women towards development of local level village towards national development. Okay. You know what? The domestic violence case, there was a report, exactly mu मैंने फिगर आउट करि पारनी सेटा को देयर वाज अ रिपोर्ट जो थरे कि मेंशन है छि दैट आमे डिजिटलाइजेशन थ्रू रे माने बहुत किसी दिन से अचीव करि देउ छै दैट दिस ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल थिंग्स तो सेही दिन से उडा को ग्रास रूट रे जाई पहुंच सारलानी ऑलमोस्ट ऑल लिखिया पे गले बट दैट्स द मेजर प्रॉब्लम ऑफ हाउस होल्ड माने कोन डिस्टर्बेंसेस you know what's the main reason से कौन पॉइंट आउट करथिले सेथरे it was the main reason of there is no regulatory boards to have a particular direction to the scripts that they are using in the serials effectively ए जिनस गुड़ा को लोक माइंडसेट रे चालुची for that reason this type of things domestic violence वाला cases आपन जो कथाटा कहले दैट सासु बहु वाला जिनसटा आज के डेट 99% सीरियल्स रो मेन एजेंडा होची सेटा commodification of women so is there is no regulatory bodies on that ना सेटा जदि ओपनली जदि सब लोक देखिले जदि डिस्टर्बेंसेस होउची जहा किछटा भी होउची आमे ग्लोबल मॉडल को एक्सेप्ट करबा कि ताको इंप्लीमेंट करबा दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट आमर तो जो जिनसटा को माने लोकली आम रिजल्व कर कथा से जिन करें ना फॉर दैट रीजन यू विल ऑब्जर्व वन थिंग दैट ब्रॉडकास्टिंग जोटा गवर्नमेंट रो अच्छे से ए टाइप कौन भी जिनस से प्रोवाइड करती लैक ऑफ सेंसरशिप दैट्स द थिंग देखो सेटा हाँ दोज आर द थिंग्स ता लगे एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म्स अच्छे जो प्लेटफॉर्म्स तुम सब तक जिन अवेल कर वी ऑल नो पॉर्न इज ए कौन डिग्रेडेशन वाला पैटर्न जोटा कि ह्यूमन बिहेवियर उपर बहुत माने चेंजेस पकाए बट इट्स ता लगे सेपरेट जिन अच्छे तुम नॉर्मल यूट्यूब रे एक्सेस कर पारनी दिस इज अ नॉर्मल थिंग और नॉट तो से लगी इट शुड हैव गोटे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रहा दरकार एथि एंड ऑलमोस्ट ऑल आ गोटे जिनस आम नॉर्मल गोटे जिन भावुचे नारी शक्ति बंधन करदे कि स्टेट इटसेल्फ रिप्रेजेंटेशन 1/3 रिजर्वेशन रखीदेला कि 50% को स्टेट रखीदेला एंड सेटा इंप्रूवमेंट होगला बट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रधानपति इज स्टिल देयर एंड इट्स प्रीडोमिनेंट तुम वोमेन रिजर्वेशंस लगे वोमेन जस्ट एज ए मॉडल हिसाब से ठिया होचंदी
but ultimately the work culture is done by the male person. The rising token. Exactly. तो सेटा को केमिति एड्रेस करियो? If the प्रधानमंत्री concept is there, then आप प्रधानमंत्री concept को आमको केमिति सेटा को eliminate केमिति करियो? Until and unless सेपटे हमरे ground zero रे जाएंगे जेपर्यंत हमें काम न करिचे, primary education जेपर्यंत strong न करिचे, achievement based education आज का डेट रे मु कहूची, there was last year itself, there was a civil servant, he was the first civil servant from the Bonda Ghati. Some नाटा मोर मन पड़ुनी बिनी या समथिंग कौन तार ना थिला. सो आमको सही टाइप इंस्पिरेशन सु क्रिएट करिवार अछि एंड सेटा केमिति हेई परिबो फ्रॉम द सिविल सोसाइटी जोटा सेटा केला की कहतले सिविल सोसाइटी. You have told about the civil society through SDGs. SDGs is not only about a microfinance institution जोटा केला जाके लोन प्रोवाइड करिवो. एटा को केही ऐड करना कि ताको वैल्यू एडिशन हम कोन करिवार अछि. दैट इज द लूप होल. प्राइमरी एजुकेशन को हम कोन प्रमोट करछे एसएसजी थ्रू रे हमें एम्प्लॉयमेंट को भाबुचे बट प्राइमरी एजुकेशन को जदि हम प्रोवाइड करियो देन आफ्टर इट विल अल्टीमेटली बूम द एम्प्लॉयमेंट वाला सेगमेंट ना रादर देन से माइक्रो फाइनेंस वाला जिनस गुड़ा को एमएसएमई सेगमेंट रो जिनस गुड़ा कि टेक्नोलॉजिकल बेस्ड हे पारे जिनस. तो द लूप होल देयर इन द एसएसजी सेक्टर इन द मिशन शक्ति दैट वी आर नॉट एट ऑल प्रमोटिंग द एजुकेशन ओवर देयर. हमें स्किल को प्रमोट करूचे. That's the thing, but it should be there. मत तो एला पर्टिकुलरली जदि मत आंसर लिखिबार थिबो देन आफ्टर तो मो ए जिनसटा लिखिबि कि दैट एसएसजी रो मेजर लूप होल होउची ओडिसा रे दैट प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर इज डिग्रेडिंग. एजुकेशन को प्रमोट करे लागि कोनटा इनिशिएटिव्स होउची मते कहलो एसएसजी थ्रो रे गुरु कोन हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? बट सेटा जदि वी आर सेइंग दैट केते 6 लाख एसएसजी समर अच्छा 70 लाख आमर वोमेन से कौन पार्टिसिपेट करुँच 70 लाख वोमेन को थ्रो रु मु तार 1% भी नहीं जाए 7 लाख कि 70,000 नहीं जाए तांको थ्रो रे जदि बेसिक एलिमेंटरी एजुकेशन को आम प्रमोट कर परिबा देन आफ्टर इट्स गुड ना. एंड एबे रिसेंटली द स्कीम्स आर द गवर्नमेंट माने मु कहा को वाला पोक करिया को चाहूनी बट स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली गोटे दिन सला एबे रिसेंटली आम डिस्कस करतलु विथ माय फ्रेंड दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड आई थिंक 1 CR कॉपीज ऑफ लक्ष्मी पुराण. एटा कहा थ्रू रे दबो एसएसजी थ्रू रे ही दबो. बट रियलिटी रे कोन हो जदि गोटे लोकर सेतिकेला पढिबार स्टैंडर्ड नाही. दैट्स द थिंग ना. जदि एसएसजी रे 70 लाख मु जस्ट गोटे दिन कहूचे माने डाटाटा को अपन माने निजे काउंटर करंतु. जदि एसएसजी रे 70 लाख अछंती एक्टिव मेंबर 70 लाख अछंती 6 लाख एसएसजी हमर इन ग्राउंड रे अछि ताहले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रे वोमेन रेट एते कम कहीं की अछि. व्हाट आर द की चैलेंजेस हिंडरिंग? And what is the repayment rate of all those loans? That's the thing. तो जदि एनालाइज करियार अछि द आंसर फ्रेम करिवार अछि ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द लूप होल. Everyone is preaching about the SDGs. तो एसएसजी रो लूप होल कौन? वी आर नॉट एट ऑल प्रमोटिंग द एजुकेशन. जदि एजुकेशन को आम प्रमोट कर पारि से थ्रो रे बहुत किसी जिन हो पारि. सपोज ये जादूपेड़ी वाला सिस्टमटा को जब इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन थ्रू आउट द स्कूल्स अंगनवाड़ी तो मुझे करुँच जब एसएसजी थ्रो मुझे कराई पारि से जिन. एंड आर द is the government is really doing the justice towards these segments, the Anganwadi and ASA workers? Just have a look. करुछंती justice तो से जगह कौन improvements दरकार. Take it as a homework and you will put it there in the group रे put करिवो that what should be the
government's initiatives to attract maximum participation, maximum will-based participations of Anganwadi and ASA workers. I just need 5 points from each of you, because this is the everyday basis challenge there in Odisha. Ground level लो सब scheme को यही माने ही implement कराउछन, from say lactating mother to नहीं कि pregnant mother to नहीं कि each and everything. You will do the research on that one. Is that satisfying that basic standard of living from that wages? Okay, ठीक है. So next come to the gender equality. So what's the thing? End discrimination. देखो एटे अछि end discrimination, violence and child marriage, unpaid exclusion and economical dependence while strengthening women's health, education, safety, assets, employment and decision making agencies. Okay. So now बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केबेटा लॉन्च हितला? January 2015. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. Okay. Promotes survival, protection and education of girls. National sex ratio at birth improved from 918 to 930. This is the latest data available with us. Okay. Got it? So it basically कौन कहूची that not only girls रो survival, ओडिया रे गोटे टर्म थिला जानछो, it was back in 4 to 5 years, कन्या भ्रूण हत्या. Have you heard about that one? तार देर गवर्नमेंट रो कौन इनिशिएटिव्स थिला? Gender identification is a criminal offense. Okay, so सेटा got it. Then protection लगी कौन कौन स्टेप्स अच्छे? That's true. महिला थाना हेल्ला तुम कहल ट्रू अच्छे, बट एलिमेंटरी गोटे जिन देख बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दिस इज एलिमेंटरी थिंग. तो एलिमेंटरी थिंग रे प्रोटेक्शंस रो कौन वैल्यूज अच्छे? इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज को तो do you heard about in 2017 or 18 it was a compulsory thing that physical education will be a part of your curriculum? In that झील मान को particularly some कौन self defense tricks गुड़ा को सिखा होतला, and that scheme कुआडे पड़ेला किस दिन लगी थिला? That's the thing. That's कौन थिला? Taekwondo and something आ गोटे कौन गोटे थिला. ता लगे टीचर भी रिक्रुटमेंट हेतिला, सब किछि हेतिला. मनोज सर मन नहीं. ठीक अच्छे. एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स. ओके. देन तापर मिशन शक्ति बहुत समस्ते जानिछ आ कादरे अध्याय कहयार नहीं, एटा तो ऑलरेडी कवर कर सारछे. PMMVY कौन? मातृबंधन. तो सेतर कौन अच्छे मातृबंधन रे? लिखो, दिस इज इंपोर्टेंट, राइट डाउन दिस वन. स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स देयर इन प्रधानमंत्री मातृबंधन योजना. The first child is rupees 5,000 in 2 installments. For the second child
rupees 6,000 rupees in first installment, in one installment. But the terms in this one is that if the second child is a girl child, then only you will get 6,000 rupees in one time payment हिसाब रे. Okay. Then targeting disadvantaged sections. को माने प्रधानमंत्री मातृ योजना रे निजको एनरोल करि परिबे. एनरोल इन द सेंस मीन्स रजिस्टर करि परिबे. That women, those who are holding BPL cards, net income is less than 8 lakh. Then women register under E-Shram, PM Kisan or VBG Ramji portals. Beneficiaries of Ayushman Bharat, women belonging to scheduled caste and scheduled tribe. And all the Anganwadi and ASA workers. Got it? एटा को भी सेमती तमे मार्क कर दबो कोटा कहार. ओके. देन जेंडर इक्वालिटी रे ओडिशा सुभद्रा दैट को माने सुभद्रा तमे जण भितर की सुभद्रा पैसा पाइछ पाइछ केबे केबे दिया जाय सर राखी इंटरनेशनल वुमेन डे एंड राखी पूर्णिमा सेबे माने गवर्नमेंट कुहे कि आमे दउछु बाकी आसला बेलू को मे बी एग्जैक्टली. सो केते टका मिलू छी 50,000 for 5 years. Scheme implementation term tenure 2024 to 2029. Okay. ठीक अच्छे. So it's all about Subhadra. How कौन? The target beneficiary 10,000 annually, rupees 10,114 CR allocated in 2026-27 over more than 1 crore women. Like गोटे लोग कटिगले 99 lakhs 99,999 रहिले. ओके. सो देन तापर मिशन शक्ति ओडिशा 70 lakh again 6 lakhs SDGs. All this the same thing, repeated thing. आ परठो फर्स्ट क्लास टिके लेंदी गला. नेक्स्ट जो गुड़ाक आसूँ सब तो रिपीट हो देखो ममता आसला ममता अलरेडी आम कवर कर सारी. मुख्यमंत्री संपूर्ण पृष्टि दिस थिंग. सुभद्रा सुरक्षा. हाँ सुभद्रा सुरक्षा वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. सुभद्रा सुरक्षार पर्पसटा लिखि देथ. व्हाट आर द पर्पस ऑफ सुभद्रा सुरक्षा. टेक्नोलॉजी लेड सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म फॉर वुमेन सेफ्टी एंड क्राइम प्रिवेंशन. टेक्नोलॉजी लेड सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स for women's safety and crime prevention. To strengthen, I would point, to strengthen public policy, safety nets, plus लिखो मैंने symbolic plus, funds for women centric emergency surveillance,
sorry, women centric emergency surveillance plus tackle emerging digital threats against women. Tackle emerging digital threats against women. Okay, so एटा GS4 भी एथरे हला कवर हला कौन डिग्निटी वाला पार्ट, एम्पाथी, इक्वालिटी एंड एथिकल गवर्नेंस. GS2 रो वेलफेयर स्कीम्स एंड SDGs, GS1 सोसाइटी, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, पॉवर्टी, सोशल एम्पावरमेंट. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट. तो एथरे 2026-27 लगी सुभद्रा सुरक्षा रे 117 CR रुपीज दिया है एंड पर्टिकुलरली एथरे गोटे मेजर पार्ट होची दैट माने some special officers has been appointed to prevent those technological threat based things just like AI pornography. Yeah, but government of Odisha is mentioning that AI pornography and nudity, something like that. Okay, so this is also coming under this scheme. Okay, so how was it? Valuated थिला तो ट्राए करंतु ये सब तो जिनस गुड़ाक इम्प्लीमेंट करने नाउ ऑनवर्ड्स जो टेस्ट गुड़ाक हम जो टेस्ट गुड़ाक सरी बैच 1 जो टेस्ट गुड़ाक सरी व्हाट एवर वी हैव कवर्ड पीपल सेंटरिंग GS1 ने आमर सोसाइटी सारी सारी से तो जो जगह जहाँ भी हमको इम्प्लीमेंट कर से जगह से जिन गुड़ाक तुम इम्प्लीमेंट कर एंड शो मी द कॉपी ऑफ दैट वन जो गुड़ाक कर बीरजा गुरु एवरीबॉडी एंड बैच 2 रे जो मैंने आगू टेस्ट लिखा जाऊँ से मैंने से सब तक जिन गुड़ाक ट्राए कर लगे लैटर ऑन विल वर्क ऑन जमती SDG टाको मु बेस कर ऑन द बेसिस ऑफ 5 P's. Here are 5 P's. 5 P's of SDG. Okay. So later on the topic, the next topic is going to be हम तो एटा को कवर करिबा प्लैनेट आसीबो ना आसीबोनी क्लियरली को. ओके देखो मु ऑनेस्ट कथा गोटे जिनस कहूँ मते 50-100 पिला इंडिविजुअल मेंटरशिप दवा लगे मोर से कैपेसिटी ना कि मुझे पारे जदि 15 जन भी पिला बसुच इट्स माय रेस्पॉन्सिबिलिटी 15 जन पिला मुझे इंटरव्यू जाके नहीं कि सो जहाँ वैल्यू एड करिया कथा आई विल डू माय बेस्ट. ओके ऑन द नेक्स्ट क्लास प्लैनेट टाको सारी दवा प्रॉस्पेरिटी टाको एंड इज इट पॉसिबल फॉर यू गाइज के टू प्रोवाइड एबे तो देखो वी हैव स्टार्टेड द क्लास एट 12:30 सुधा स्टार्ट करते इट इज 2:30. ओके अप्रोक्सीमेटली 2 घंटा गला. ओके सो इज इट पॉसिबल फॉर यू विल टेक ए ब्रेक इन बिटवीन दैट विल टेक ए ब्रेक नेक्स्ट गोटे दिन सबुतक सारदेवा 4 hours 5 hours भितर नॉट पॉसिबल पेशेंस नहीं से इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक द मैराथन किए कहला मैराथन वर्ड लाइक दैट. देखो आपण मिस करेंगे इट्स ए डिफरेंट थिंग कि जो पिला मानको कि रेकॉर्डेड वाला जिनस भी जीव दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट दिस इंटरैक्शंस एंड ऑल वृषभानु पूरा पूरी साइलेंट कौन माने आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन or maybe you are selected there in the intelligence bureau for that reason you are silent mo observe kari सब तो दिन सब आज so it's all right. तो next एटा करिबा then after that good governance वाला part टाको will start typical GS वाला good governance then agriculture then society and social justice all those things जेमति कि सेतर केमति की टर्म्स टर्मिनोलॉजीज गुडा को ऐड करि परिबा and किछि PM speech PM quote all those things we will do those things. Okay and kichi examples and all ठीक अछि. have a good day. next पूरा मैराथन करी सार दवा वीकेंड हला लेट हो ना फिर भी मु देखुच बिकॉज देखो टू बी वेरी फ्रैंक ये जो
न्यूमेरिकल डाटाज मु कहूँ न्यूमेरिकल डाटाज जो गुड़ाक अच्छे ना मो लगे प्रैक्टिकली पॉसिबल न सब जिन मन रखा फॉर दैट रीजन आई हैव रिटन ऑल दोज थिंग्स जोड़ा कि न्यूमेरिकल डाटाज अच्छे कि की फीचर्स अच्छे किसी एडिशनल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रु बाहर तो से जिन गुड़ाक मुझे पुट कर एकाथरे देदेवी देन आफ्टर इट्स गोइंग टू बी ए हेक्टिक वन हो तो मुझे पढ़ाया को भी इंटरेस्ट हेनी सो इन द क्लास इटसेल्फ आम जो कवर कर दो एंड स्टैंडर्ड रिसोर्सेस को तुम रेफर कर दो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द फाइन वन ओके सो विल डू दिस वन तो नेक्स्ट कौन माने गोटे थर कंप्लीट कर दवा तो इवनिंग क्लासेस लगी किए अवेलेबल हो पार बिरजा को प्रोब्लेम हम ना ओके तुमको भी प्रोब्लेम ये तो घर पाख पिला कौन ठीक अच्छे सो मु कहबी मु ग्रुप रे मेंशन करी आउ कौन कार डाउट्स अच्छे को किसी रिगार्डिंग देखो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लासेस गुड़ाक मेन्स एनरिचमेंट रो तुम अभी जो गैप पीरियडटा अच्छी 2.5 वीक्स जो गैप पीरियडटा देती ता भितर वैल्यू एडिशंस कम्स टू रेस्ट ऑफ द थिंग्स एंड इनफैक्ट मुझे गोटे जिन तुम को देखेनी ज्योति ज्योति को काली देखी that all the students those who are there in the batch 2 a batch 1 तो तांको लगी मोटे जिन करूली it will take time here are some things रही देखे संगे संग just a minute brainstorm yeah मु गोटे गोटे करके रिलीज करी सो यू विल गेट टू नो अबाउट दोस थिंग्स टेस्ट 8 देथिलो ना लास्ट तुमने सो दिस इज गोइंग टू बी योर 1 पेज रिवीजन शीट्स फॉर ईच क्वेश्चन ओके डायग्राम वाला पार्ट को वी आर समहाउ मिसिंग सो द क्वेश्चन रिलेटेड टू टेस्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 अकाउंटेबिलिटी RTI here is the handwritten diagrams here is about RTI here is key challenges hindering effective implementation of RTI, strengthening of RTI, like that. India's AI shift, adoption based governance, AIGG, तार aspect ताको केमती करा होगा, all those things. Corruption related question, these are the things. Okay, we'll do this one. ये सब तो जिन गुड़ाक टिके निज आंसर सहित मगअप करने ट्राए कर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू बाय टेस्ट 1 टू नहीं टेस्ट 8 पर्यंत भी प्रोवाइड करी सो मुझे एक्सपेक्ट करी दैट एफएलटीज बेलू को यही सब तो जिन तुम कॉपीज देखा हो ऑलरेडी गुरुर कॉपी देखा तेजस्विनी प्रीति मिश्र कॉपी देखा सो यही सब तो जिन गुड़ाक बिरजार किसी केस देखा बट मेजर ऑफ द केसेस मिसिंग रोचे तो युवा जिन सब तक माने प्रिडोमिनेंट होकर रही okay that's the thing it's all about how कौन doubts किछि भी queries किछि anything अच्छे how कौन expectations अच्छे कौन चाहूँ चो means apart from test series रा कौन add कले better हो I just honestly want to get the feedback देखो मॉडल आंसर लेंदी जोटा कहूँ फॉर दैट रीजन दिस इज द 1 पेज रिविजन्स ना मोर कौन इंटेंशन नाला ये बसिक लिखी 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 बनइबार कौन इंटेंशन नाला मॉडल आंसर जोटा लेंदी कथा कहूँ चंदन इट सम हाउ एथि दिया ना तुमको लगुच तुम पाखे कंटेंट सब किसी अच्छे बट सम स्टूडेंट्स आर देयर जो मन कंटेंट भी ना को फर्स्ट टाइम लगे भी लिखुं एंड अनदर एस्पेक्ट इज दैट मॉडल आंसर लेंदी हवा पछर दैट मु आरटीआई गोटे एस्पेक्ट क्वेश्चन पचारि बट मु तो जाऊन ना ओपीएससी क्वेश्चन बनवा लगे कि उद्यम जाऊन तो क्वेश्चन बनवा लगे
किसी भी डायमेंशन्स रो आसी पारे एंड ये सेक्शनल टेस्ट टाइम रे यू हैव द टाइम आम एत मैंने मूर्ख नुह कि आम से जिन को भाविनु कि पिला को पढ़ाई लगे डिफिकल्टीज हो बोले बट एथि लगी दिखाई दैट इट्स जस्ट गोइंग टू बी ए स्टडी मटेरियल आरटीआई रिलेटेड आउ किसी भी तरह क्वेश्चन आसो यू कैन राइट फॉर दैट रीजन ओनली देयर इज नो मत डिफिकल्टीज होनी मत 8 पेज 9 पेज मॉडल आंसर डिजाइन करने मतलब 300 वर्ड भर दबार थी मत 15 मिनट लगे कराया लगे मुझे निजे लिखिकी देदेवी 8 पेज 9 पेज कहीं मत तो कष्ट हो ना एंड एफएलटीज बेलू को इट्स गोइंग टू बी दैट 250 वर्ड्स तो सेक्शनल टेस्ट निजर एनरिचमेंट करवा एंड आंसर राइटिंग को भल कर गोल्डन टाइमटा तो से लगे यही टाइम ही कष्ट करार अच्छे जो न करदेली से कथा 5690 यू विल बी देयर गॉट इट ठीक अच्छे मो पर रागिबे दैट भोक कर